Start. So, good morning, everyone. I, Jayede Patil, as a joint treasurer of Pune Vikasa, it's an absolute pleasure for me to welcome you all today. This program is organized by Pune branch of Vikasa jointly with Amravati, Bharuch, Dhule, Goa, Jamnagar, Kolhapur, Nanded, Vapi, branch of Vikasa of WIRC, and Bilaspur branch of Sikasa of Bilaspur branch of Sikasa of ICI. I am delighted to extend a warm welcome to each and everyone. We have gathered here for a program on CA Foundation related to CA Foundation 0. I request Pratna ma'am. Hello. Good morning, everyone. Foundation is where actually the students enter to CA examination. और मुझे ऐसा लगता है कि they get the first taste of how CA curriculum is to be designed and what institute expects out of CA students. So it's a very important juncture in your career. It's the start of your entry to CA course. और उसमें अगर इंस्टीट्यूट कैन हेल्प इन इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग CA students, it is our duty to help the students. And I'm really thankful for all the Vikasa branches and Sikasa branches that they've agreed together कि हम लोग ये CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हम आज का राइज एंड रिवाइज वाला सेशन रख पाए. And I'm very thankful also कि रश्मि मैम has agreed to take this session for CA students. I mean, I remember when I gave my CA foundation exam, पेपर एक ही दिन का होता है, but you have to prepare for months and months. And I hope so कि जो आज का हमने सेशन रखा है मैथ्स और अकाउंट्स का, आप उससे you get revise and learn and clear your concepts. So not taking further more of the time आप लोगों का. I know it's a very peculiar time. So I would like कि Jay should continue the session. Thank you, Pratna ma'am. So I know all we are excited for our revision batch, but before that, I want to give introduction about Rashmi Lonikar ma'am. So Rashmi Lonikar ma'am has 17 years experience in CA field. So they have teach. They are faculty for business mathematics for CA Foundation on virtual coaching platform by ICI. Faculty for MCS and orientation for CA students for the past 10 years at Nashik, Jalgaon, and Dhule branch. So many more we can get we can get many more knowledge from Rashmi ma'am. So I request Rashmi ma'am to take charge from me. Yes. Good morning, everyone. Thank you so much, Jay, for such a wonderful introduction, and thank you, Pune branch, for the warm welcome that you have offered, and all the other Vikasa branches. It's so good to be able to connect to so many students at so many different branches. Some of you may be attending my sessions on YouTube and institute at the institute level. So some of you are familiar with me. So right along, let us dive into the session. So around one hour each, we are going to do. So and as and when, like after 1 hour, we'll take a 5 minutes break, and then if by the way you have any questions, you could just post them, and the Pune branch will like send those questions to me, and so I'd like to take them up. All of you who have attended yesterday's mock exam, I appreciate that you took the time out and you went ahead and appeared for the mock exam. So a very round of applause for all of you. It's a very brave thing to do. बरेचदा असं होतं ना की आपल्याला डोळे बंद केले की छान वाटतं असं, बट तुम्ही डोळे उघडे ठेवून तुमची किती तयारी झाली ह्याला तुम्ही फेस केलं, ही खूप चांगली गोष्ट है. जिन्होंने भी कल के मॉक दिया है और उन्होंने फेस किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ताकि आपके पास अभी बहुत टाइम है
कि जब आप उसमें से आपके एनालिसिस करके आपको ये पता लगे कि ये टॉपिक मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो मैं वहां पे उसमें आप अच्छे से थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं, या ये मेरे केयरलेस मिस्टेक्स होते हैं। तो बिल्कुल ना ऑब्जेक्टिवली आपको एनालाइज करना है. खूप शांतपणे बघायचंय काय चुकलं काय चांगलं झालं. ओके. You should not beat yourself up ki I did not attempt that. So the most important thing while attempting paper 3 is that you have to be very gentle with yourself. आपको अपने से बहुत प्यार करना है, अपना कॉन्फिडन्स बिलकुल कम नाही होणे देना है, आणि हा विश्वास ठेवायचा आहे की काही गोष्टी सोप्या असतात, काही गोष्टी अवघड असतात. तर त्याच्यातनं आपल्याला बाहेर पडायचं. इव्हन सॉल्व्हिंग करताना माझ्याकडनं पण चुका होतात. कारण डोक्यात एक विचार चालू असतो, काही दुसरं पण सांगायचं असतं, तेव्हा केअरलेस मिस्टेक्स होतात. तर ठीक आहे, मला तर निगेटिव्ह मार्किंग नाहीये, पण तुम्हाला आहे ना, तर तुम्हाला ॲक्युरसी ही फार इम्पॉर्टंट आहे. सो that is the first thing, that be gentle to yourself. Second thing I would like to tell you is that start doing pranayam every day before you study. After you finish off your studies, make sure you're doing shavasana or some asana, or listening to very soft music, so that it will cool you down, it will declutter your mind, and then you'll be able to um, like refresh your mind. Okay. Especially because the third important thing is stay hydrated. Very very important is that you must be able to पानी अच्छे से पियो, ग्लूकोज पियो. सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स उसकी कोई जरूरत नहीं है. मठ्ठा, ताक, या सगळ्या गोष्टी प्यायच्या आणि ग्लूकोज प्यायचं. दैट्स मोर देन इनफ. कुछ बहुत एक्सपेंसिव कुछ पेरेंट्स को लाने के लिए कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं. आइसक्रीम आइसक्रीम तो बिल्कुल मत खाइए, पता नहीं गला खराब हो जाए, कुछ हो जाए. नाउ दिस इज अ वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर यू. Your immunity is also down because you're studying for 12 to 15 hours a day. So that is the case. Okay. So very important is that you keep your mind sharp. How will you do that? By doing yoga asana. Secondly, you keep your body fit by staying hydrated. And thirdly, by improving your studies. So how do we do that? We'll start off. Okay. So all the best, and let us go dive into the topic today. So let us start with the very basics. Yes, I know you might be thinking कि ये तो मुझे आता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि एग्जाम में जाते समय antecedent, consequent, we tend to forget those words. Okay, so we'll just quickly go through it as fast as we can, but we'll have a pace that is so that I can take everybody along. Okay. So a ratio is a comparison of sizes of two or more quantities of the same kind. So this is very important that they have to be of the same kind. So you cannot compare apples with oranges. Okay, so you can't do that. Okay, so just be careful when you are answering the question. So ratio of A is to B can be written as A by B or A is to B. Okay, so A and B are called as the terms of the ratio. A जो पहला है उसको बोलते हैं antecedent, and B the second one is called as consequent. पहिला जे आहे त्याला आपण antecedent म्हणतो. A पहिला आणि सी नंतर ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्येच आहे. तर पहिला कोणता आहे? तर ए. So A is the first term and B is the second term or the consequent. Both terms of a ratio can be multiplied and divided by the same non-zero number. This is also important, that the number that you are multiplying or dividing by is the non-zero number. So for example, like if I have 2 is to 3, and if I multiply both by 3, so this will become 6. 2 3s are 6, and this will become 9. So these are equal ratios. 2 is to 3 is same as 6 is to 9. Okay. The order of the terms in a ratio is very important. म्हणजे 2 is to 3 is not equal to 3 is to 2. Okay. पहिला नंबर पहिला, दूसरा दूसराच असला पाहिजे. So then the order of the terms in the ratio is important. Then quantities to be compared should have the same unit, so that you should not compare grams with kilograms or meters with kilometers. Okay. To compare two ratios, convert them into equivalent like fractions. Then factor multiplying ratio is the ratio by which original quantity is multiplied to get the new quantity. Then this is also a unique term. Greater inequality is when A is greater than B, and less inequality is when A is less than B. Then let us quickly do the sums. So I don't know. Can I see their answer, students' answer?
or they will be on the YouTube? Okay. So two numbers are in the ratio 7:8. If 3 is added to each of them, the ratio becomes 8:9. The numbers are. So, such type of questions, you have to just use the options given and then you will be able to do that. Okay. Okay. Thank you, Jay. The live is going on over there. Let me just check. Okay, yes. Okay. So all those who can answer on the YouTube. So that will also be helpful for me to know whether you're following or not. So let us see. See, the ratio is 7:8, right? तो आपको ये देखना है कि जो भी नंबर्स हैं वो 7 और 8 के टेबल्स में आने चाहिए तो ही आप उसकी ओर जाइए, ठीक है। अब जैसे यहाँ 16 18 है, ये हमें दिख रहा है ना 8:9 है ना, ये 2 का तो टेबल सबको आता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, विल नॉट गो ओवर देयर। सो ये मुझे मालूम है ये ऑप्शन ऑलरेडी नहीं है। सो एलिमिनेशन इज अ वेरी गुड वे टू आंसर दोस क्वेश्चन। सो हियर आई हैव 7:8, देन this is 8:9, right? Again, 8 threes are and 8 nines are. Okay, so this option is also not there. So 2 already we have eliminated. Now we have 14:16 and 21:24. Both of them are 7:8. Okay. Now after we add 3, so we'll quickly over here only write down. So how much is this? This is 17. The ratio becomes 8. So 14 plus 3 is 17. So now here, which is a it's a prime number. So here if I add 3, what do I get? I get 24, and if I add 3 here I get 27. So 24:27, which is in the ratio 8:9. So 3 is the option. Why I'm telling you this is that you should not just blindly start option A देख लूं, option B देख लूं, ऐसा असं नाही करायचं. थोडंसं लॉजिक आधी वापरा आणि त्याच्यानंतर एलिमिनेट करा. ओके. So that becomes easier. Like here, when I already can see it is 8:9, there is no point in trying to add 3 to it and trying to find the values. Okay. Like the two numbers are in the ratio 3:4. If we subtract 8 from each of these numbers, the ratio becomes 2:3. Okay. So two numbers are in the ratio 3:4. Now here this becomes very difficult because 22 is 11 twos are. Okay. Now 3:4. Let us see this and this. So do we have here, if 8 subtract from each of the numbers, the ratio becomes 2. So minus 8 if I do, what do I get? I get 16 minus 8 here I get 27. Okay, so the ratio becomes 2:3. Then here we don't have that. So minus 8 if I do over here, what do I get? I get again 16, and minus 8 when I do over here, I get 424. So 2:3, right? So here I'm getting 2:3. So 2 will be the correct answer. Two numbers are in the ratio 3:7. If we add 6 to each of the ratio becomes 5:9. Okay, 3:7. This is 3:7. This is not 3:7. This is 3:6. Okay, so let us try over here. If I add 6 here, I get 15. If I add 6 here, I get 27. So it becomes 5:9. So A will be the correct answer. Okay. Okay, now compounding of ratios. This is where sometimes, we have a little problem. And why this is important is because this is something that you carry forward. जर हे आपले बेसिक्स आपले क्लिअर नसेल तर आपल्याला काय होतं की पुढचे जेव्हा सम्स करतो तेव्हा आपल्याला ह्या फंडामेंटल जे बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैथमेटिक्सचे त्याच्यात अडचण होते. ये हमारे मैथमेटिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो ये सब चीजें जो है फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So I'm emphasizing on that so that you do not make arithmetical errors when you are solving the problem. So when we have the ratios A is to B and C is to D, then the compounding gives us AC,
into BD. So numerator and numerator are multiplied and denominator are multiplied. Okay. Then these are the different types of ratios. So inverse ratio, if ratio is A is to B, then inverse ratio is B is to A. म्हणजे A upon B असेल तर डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर मध्ये लिहायचा आणि न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर मध्ये लिहायचा. When duplicate ratio is when you have A square upon B square. So you're simply multiplying the ratio with itself. Triplicate, you're multiplying the ratio 3 times with itself. So this becomes A cube upon B cube. Okay. Subtriplicate ratio is square root and subtriplicate ratio is cube root. Okay. Then continued ratio. It is the relation between 3 or more quantities. So A is to B is to C. Then commensurable and uncommensurable ratios. When the ratios of two quantities are of the same kind and they are expressed in the terms of two integers, then the quantities are said to be commensurable. And when they are not in terms of integers, they are uncommensurable. So if I have the ratio of square root of 3 is to square root of 5, I say it is uncommensurable. Okay. Okay. Now let us see this. Anybody can put the answer in the chat box on YouTube. You are most welcome to do so. Okay. Now, the inverse ratio of 11 is to 15 is. So, what is inverse? We have just written over here. Okay, thank you. Yes. So, here you have to remember A upon B is to B is to A. So, like whatever theory slides are there, you make sure that you know those. Okay. Then the ratio of two quantities is 3 is to 4. The antecedent is, so we know if it is A is to B, this is what? This is the antecedent. Antecedent. And this will be, the antecedent is 15. Okay. So now 3 is to 4. And they are saying the antecedent is 15. But I know antecedent is 3. So what it means is I have to multiply by what number that I get 15. So I have to multiply by 5. So 3 5s are 15. Now in a ratio, whatever you do to the numerator, you have to do the same thing for the denominator. So this also has to be multiplied by 5. So 15 is to 20. So they are saying if the antecedent is 15, the consequent is what? It will be 20. Okay. Yes, very good. Baswati Prince, Tanmay. Yes, very good. Now let us see the option, the ratio of the quantities 5 is to 7. If the consequent of its inverse ratio is 5. Now consequent of its inverse ratio म्हणजे काय करायचं आधी इन्व्हर्स करायचा ठीक आहे आपको पहले इन्वर्स करना है उसके बाद सब कुछ करना है now 5 is to 7 the inverse is 7 is to 5. Now they are saying if the consequent of the inverse ratio is 5, then the antecedent is. देखिए कितना simple sum है, right? But इतना language में उन्होंने उसको उलझा के रखा है तो आपको ये पता लगना चाहिए की आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है हे जे सगळं लिहिलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला वाचून हे बघायचं की कोणची स्टेप आपल्याला पहिली करायची आणि कोणची नंतर करायची ठीक आहे द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 ठीक आहे इथपर्यंत ठीक आहे if the consequent of its inverse ratio. So that means what? I have to first find the inverse and then find the consequent. Okay. So we found the inverse 7 is to 5 and then we are saying that the consequent will be
the consequent is 5, so antecedent is 7. Okay, so C is the answer. तन्मय, ये जो पीडीएफ है ना, ये लेक्चर होने के बाद मैं पुणे ब्रांच को भेज दूंगी, तो दे विल सर्कुलेट इट. ओके, or they will just put it up on the website. Okay, don't worry. Okay, yes. The ratio of two numbers is 7:10 and the difference is 105. So here I can see the ratio, the difference is 105. Here also I can see the ratio, the difference is 105, and here also I think, yeah. So now what I have to see is the ratio is 7:10. Now let us see, is the ratio 7:10 over here? Is the ratio 7:10 here or 7:10 here? So we have to see. So what we are going to do, 200, now 7/10 is 0.7. तो आप क्या करेंगे, जल्दी से कैलकुलेटर पे आप देख लेंगे 200/305 है या क्या है, वो देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा, किस वाले इसका रेशियो जो है 7:. Okay, so 200. So can anybody tell me which of this ratio is 200 divided by 305 is how much? 0.655. Then this is what? 185 divided by 290. This is 0.63. 245 divided by 350 is 0.7. Okay. So we can find here that this is the answer. Okay. Yes, Prince, thank you so much. Yeah. Then PQR are three cities. The ratio of average temperatures between P and Q is 11:12, and that between P and R is 9:8. Then the ratio between the average temperatures of Q and R are. The important thing here is that we have three cities. We have three cities and ratio of temperatures between two cities is given. Okay. So first ratio is P upon Q, which is equal to how much? 11:12, right? And then between P and R is equal to 9:8. Now they want Q is to R. So which is the alphabet, which is the city that they don't want? They don't want this. Okay. तो उनको ये P नहीं चाहिए. P is to Q and P is to R. Okay, they don't want this P. So what we are going to do here is that we are going to try to eliminate this P. Now the P has the value here 11 and here P has the value 9. So what I do is I multiply this by 9 and I multiply this by 11. And as you know, in ratios, whatever I do to the numerator, I have to do to the denominator also. So I multiply this by 9 and this by 11. So what will this become ratio? This becomes 99 upon 12 9 the 108. And here it becomes 99 upon 88. So we have P upon Q and P upon R. Okay. So now what do I have? I need Q is to R. So Q will be 108 and R is equal to 88. Obviously, we don't have something like this. So I divide by 4. So 4 becomes 22 and 4 becomes 27. So this is 27 upon 22. Yes, Prince, your answer, please. Yes. Okay, so B is the correct answer. So I hope everybody is following these questions. These are simple, basic questions because like even when we are doing permutation combinations also simple, this arithmetic accuracy has to come into place.
Okay. Now let us go to proportion. So we are finished with ratio. I hope everybody has followed. If you followed, just press the like button or put it in the chat box so that I know that you are with me. If there is any question of the speed, you could let me know. खूप घाई वाटत असेल, खूप फास्ट वाटत असेल तरी कळवा. पण या पेसने आपण गेलो तर आपण खूप साऱ्या गोष्टी कव्हर करू शकतो. म्हणून या स्पीडने घेते. पण कुठल्याही पॉइंटला तुम्हाला वाटलं की हे फास्ट होतंय तर तुम्ही सांगू शकता. ओके. आप में से किसी को भी लगे कि फास्ट हो रहा है तो आप जस्ट चैट बॉक्स में या मतलब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. तो मैं वहां से फिर उसको हम लोग स्पीड को एडजस्ट कर लेंगे. लेकिन इस स्पीड से जाएंगे तो हमारे पास बहुत चांस है कि हम बहुत सारी चीजें कवर कर सके. ठीक है. Okay. Now, what is proportion? So, ratio is when you're finding ratio, we are taking two numbers. Here, what we are saying, we are talking about equalities of two ratios. So, when I have four terms A, B, C, D, you can take X, Y, Z, U, V, X, Y, Z, those, what choice of alphabet does not matter. These are terms of the proportion A is to B is equal to C is to D. Okay. मतलब दो रेशियो है A is to B, दूसरा रेशियो है C is to D. इक्वालिटी ऑफ दोस रेशियो करेंगे तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं. A and D are called as an extreme term. So A and D, what are they called? These are called as extreme, and B and C are called as middle terms. So B and C are called as middle terms. Okay. So okay. क्रॉस प्रोडक्ट रूल इज, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो नॉर्मल हम लोग दो टर्म्स लिख के करते हैं, सो दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी. सो व्हाट इज इट कॉल्ड? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ओके. सो वेरी सिंपल. सो लेट अस गो फर्दर. Yes, and my exam point of view questions only we are going to solve. Abhi, there is no time for understanding wo sab. We are going to concentrate on whatever is relevant to you, whatever I think is important, or whatever I think that they might ask you in the exam. So we are considering only that. Okay. Yes, Baswati, clear? Continuous proportion. A, B, C is said to be in continuous proportion where B square is equal to AC. अभी ऊपर वाला जो है इसमें प्रोपोर्शन और ये इसमें क्या फर्क है? वहां पे हमारे पास चार टर्म्स थे ABCD एंड यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स है ABC. ओके. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ABC, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्युअस प्रोपोर्शन. ठीक आहे. वरती आपण चार नंबर्स घेतले होते, इथे तीन नंबर्स घेतले होते आणि ह्याच्यामध्ये बी ला जे आहे आपण मेन प्रोपोर्शन म्हणतो. ए आणि सी, ए ला म्हणतो फर्स्ट प्रपोर्शन, बी ला म्हणतो मेन प्रपोर्शन आणि सी ला म्हणतो थर्ड प्रपोर्शन. ओके. सो वी आर व्हेन वी हॅव थ्री टर्म्स, we are calling the first term as first proportion, then middle term as mean proportion, and C is called as the third proportion. And very importantly, B square is equal to AC. And if you remember, when you are done geometric means, there also we have the same formula. B square is equal to AC for when we have three numbers who are in GP. Okay. And if there are many terms, then you can keep on writing like this. So they are said to be in continuous proportion. Okay. The equality of two ratios is called as proportion. Then extremes, middle term we have already done. Cross also we have done. Okay. Yes. Now, these are some of the properties. You can get a simple question on this. They can ask you, what is the alternando of this ratio? Okay. Now, if A upon B is equal to C upon D, then B upon A is equal to D upon C. A upon B is equal to C upon D. So what are we doing here is, we are simply इन्व्हर्टेंडो नावातच लिहिलेलं असतं. इन्व्हर्ट करायचं म्हणजे उलट करायचं. तर काय होतं? B upon A is equal to D upon C. ठीक आहे.
डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। इन्वर्ट कर देंगे, हम उसको उल्टा कर देंगे। ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो में क्या करेंगे, ऑल्टरनेट कर देंगे, इधर का उधर और उधर का इधर लेके आएंगे। सो माई रेशियो इज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो व्हाट वी हैव बीन डन हियर इज ए अपॉन सी, मतलब this portion we are taking. So C, B, we are changing. Okay. So that is why A upon C will be equal to B upon D. Componendo, if A upon B is equal to C upon D, then A plus B. Componendo means compounding. Na? You remember in school we have studied about atoms and atoms and molecules and elements and compounds. So elements simple होते हैं, compounds दो elements को मिला के बनाते हैं, उसको compound बनते हैं ना. तो componendo means what? कि I have two ratios in proportion, and then if I like join them together, I get a new ratio. So A upon B is equal to C upon D. So what am I doing over here? So A upon B is equal to C upon D. I am adding. So what am I adding? A plus B upon B is equal to C plus D upon D. अब आप बोलेंगे कैसे आया, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें रिसर्च में नहीं जाना, अभी हमें एग्जाम क्रैक करनी है, वो भी एमसीक्यू है। तो उसमें हमें ये क्यों आया कैसे आया उससे ज्यादा बात सोचना नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें ये फॉर्मूलेस आने चाहिए। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पोनेंडो, सो इट इज ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। So dividendo means I'll get a minus sign. So A upon B is equal to C upon D. So this is A minus B upon B is equal to C minus D upon D. Okay. And when I combine these two, componendo and dividendo, when I combine this, I get this famous formula A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. Addendo means what? If I have a continuous ratio, A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F, which is equal to K, then I say A plus C plus E upon B plus D. So all numerators I am adding, all denominators I am adding, and it is giving me K. Okay. So that is also possible. Okay. Then the number 2.4. Okay. So let us see this sums directly over here. So I'm going to give this PPT anyhow. So those solved examples are from the study material, which I feel that you should go through. And if we get the time, I'll go back to them. But usually I don't get the time. So as far as possible, I try to solve which is unsolved in the study material. Okay. So if x upon y is equal to z upon w implies y upon x. तो जब ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिखा होता है ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर दैट आई राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ द structure that we are used to. So I'm going to write it here. X upon y is equal to z upon w. They have given this implies y upon x is equal to w upon z. ठीक है. एक्स वाय होता तो वाय अपॉन एक्स झाला, म्हणजे काय झाला, इन्व्हर्ट झाला. ठीक आहे. इन्व्हर्ट झाला म्हणजे व्हॉट इज दिस, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिव्हिडेंडो नाही, कंपोनेंडो नाही, ऑल्टरनेंडो नाही. सो डी इज द करेक्ट आंसर and it is invertendo. Okay. If P upon Q is equal to R upon S, if P upon Q is equal to R upon S and P minus R is equal to upon Q minus S. So what happens here is when I have this ratio, then it becomes P upon R is equal to Q upon S. So I can write this ratio as this. आपण ह्याला ऑल्टरनेट केला आणि मग त्याला केला P minus R upon Q minus S.
P upon Q is called as how much? What is it called as? Is it subtrahendo? Yes. Because here what we are doing? We are subtracting. Okay. If A upon B is equal to C upon D implies A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D. So that is simply my componendo and dividendo. Okay. Yes. Now, find the mean proportional between 25 and 81. So, mean proportion म्हणजे काय? B square is equal to AC. Okay. So, what I am going to get is B square is equal to 25 into 81. So, B is equal to square root of 25 into 81. So, here don't try to use the calculator. Here you should be able to, you know you already know the square root of 25 as well as 81. So square root of 25 is 5 and square root of 81 is 9. So 5 nines are 45. Okay. Then the number which has the same ratio to 26, that 6 has to 30. 6 is to 13 is equal to x upon 26. The number which has the same ratio to 26 as 6 has to 13. So 6 upon 13 is equal to x upon 26. So here I can see I have to multiply 13 by how much? Into 2 when I do, I get 26. So into 2 when I do, I will get here 12. So answer is 12 and none of these. Then the fourth proportion to A square and C is. So this is A upon B is equal to C upon D. Now the numbers are what? 2A. What is now this? This is my A, this is my B, and this is my C. Okay, so 2A upon A square is equal to C upon D. Okay, so how much will D be? This A is going to cancel with this A and I will get D is equal to C into A upon 2. C into A upon 2. So this is AC by 2. Okay. Right? Yes, very good. So this is where you have to answer the questions. And then next question will be what? If A is to B is 4 is to 1, then square root of A upon B is equal to B upon A. So let A be equal to 4x and let B be equal to 1x. Okay, current ratio to hai na 4 is to 1. So this is what we assume. Then square root of A upon B plus square root of B upon A is equal to how much? Square root of 4x upon x plus square root of x upon 4x. Now this x will get cancelled and I am getting square root of 4 plus square root of 1 upon 4. How much is square root of 4? 2. Plus how much is this? 1 upon 2. So 2 plus 1 upon 2 is nothing but 5 upon 2. So A is the correct answer. Now we are talking about indices. So what is the overview of indices is that we have so many laws. Law 1 says that a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. म्हणजे मध्ये मल्टिप्लिकेशन साइन असेल तर त्यांचे जे पॉवर्स आहे ते ऍड होतात. ए रेस टू एम इथे जर असं असेल ब्रॅकेट असेल तर ते मल्टिप्लाय होत आहे. इथे ऍड होत आहे, इथे मल्टिप्लाय होत आहे. Remember, a upon m upon a upon n, a raised to n is equal to a raised to m minus n. So law 2 is talking about division. So this is division. So addition, division, multiplication. And then here we also have this fourth law which is very important. a b raised to n असेल तर हा जो n आहे तो प्रत्येक टर्मला ऍप्लिकेबल होतो a raised to n into b raised to n. Okay. And a raised to 0 is 1. This is very, very important. Any number raised to 0
is always equal to 1. And square root of m square root of a is a raised to 1 by m. म्हणजे काय होतं की जर मी cube root of a म्हटलं तर this is simply a raised to 1 by 3. So what is the first law of indices? A into m, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. Second law says a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. Then third law says that a raised to m into raised to n, a raised to m raised to n, then it is a raised to m into n. Fourth law is saying ab raised to n is a raised to n, b raised to n. And fifth law is a raised to 0 is equal to 1. And sixth law is mth root of a is equal to a raised to 1 by m. Okay. Clear up to now? Yes, everybody with me? So these laws I have also written it in the usual form, that is in the chart side. These are very important, which you can get a direct sum also, and you can also like applicable wise also. This is good. So now a raised to 0 is equal to 1. Any number raised to 0 is always equal to 1. Square root of a is equal to a raised to 1 by 2. Cube root of a is equal to a raised to 1 by 3. Mth root of a is equal to a raised to 1 by m. And 1 upon a is equal to a raised to minus m. And a raised to minus m can be written as 1 upon a raised to m. Okay. Now let us solve this. हे सॉल्व केलं की आपले जेवढे वॉर्मअप्स आहे ना ते सगळे पूर्ण होतात. So this is which rule I'm going to apply, which law? I'm going to apply the first law. So this will be equal to 4 raised to 3 plus 4, which is equal to 4 raised to 7. 5 raised to minus 1 raised to minus 1. So I have 1 upon a is written as a raised to minus 1. So this can be, inner bracket can be written as, this is 1 upon 5 raised to minus 1. So this is again, I have to write it as 5 upon 1. So answer is 5. Right? Yes. Can I get the answer for the next one? X raised to minus 11 into x raised to 6. Anybody can answer that? Yes, very good. So this is nothing but just because it's a minus sign does not mean anything, because here what do I have? I have the multiplication sign. So this is minus 11 plus 6. So this is x raised to minus 5. Right. Okay. Then 1 upon 2a, and similarly you could do that. So let us do this last one. 2 raised to x plus 3 is equal to 16. Very importantly is that here I have to express 16 in terms of power of 2. Express 16 as a power of 2. Okay, we are doing the gth sum. So how much can 16 be written as? So 2 ones are 2 raised to 1 is 2. Let us start with first. 2 raised to 0 is 1. हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे की लक्षात ठेवायचं की 2 raised to 0 हा 1 असतो, 0 नसतो. Any number raised to 0 is always equal to 1. So 2 raised to 0 is 1. 2 raised to 1 is 2. 2 raised to 2 is 4. 2 raised to 3 is 8. And 2 raised to 4 is 16. Yes. Thank you, Prince. Thank you, Tanmay. So this is what 2 raised to x plus 3 is equal to 2 raised to 4. So that means x plus 3 is equal to 4. When the numbers are same, I can equate the powers. When the numbers are same, I can
equate the power. So here the power is this and here the power is this. So I am equating this. X plus 3 is equal to 4. X is equal to 4 minus 3, which is equal to 1. Excellent, Prince. Very good. Others also keep answering. Now how much will this be? 4 x raised to minus 1 by 4 is expressed as. So 4 is going to remain as it is. Now x raised to minus 1 can be written as 1 upon x. So here I have x raised to minus 1 by 4. I can write it as x raised to 1 by 4 in the denominator. So is first the answer? No. Is this the answer? No. Why? Because I have the fourth root of x. So C is the correct answer. Yes. The value of 8 raised to 1 by 3. कधी पण असे सम्स आले तर काय करायचं आपल्याला नंबर सिंप्लीफाई करायचं हमको वो जो नंबर है उसको सिंप्लीफाई करना है तो 8 को हम कैसे लिखेंगे 2 रेज टू 3 हमको सबको मालूम है तो 8 रेज टू 1 by 3 को कैसे लिखेंगे 2 रेज टू 3 रेज टू 1 by 3 so which is equal to 2 so directly C is the correct answer right. Okay. Now let us go to logs. So whenever I have a raised to x is equal to n, remembering that n is greater than 0 and a is also greater than 0 and a is not equal to 1. Okay. And a is not equal to 1, then I have ये तीन conditions भी बहुत important है अगर उसमें से theory question आ जाता है तो ये conditions भी पूछ सकते हैं तो a raised to x is equal to n so I say that x is equal to log n to the base a. Okay, this is called as log n to the base a. So log which uses 10 as the base is called as common log. Log which uses e as the base is called as the natural logs. Important thing here is this. Log a to the base a is equal to 1. Log 1 to the base a is 0. Log b to the base a into log a to the base b is also equal to 1. And log b to the base a into log b to the base c is log c a to the base c. तो ये सायक्लिक आहे की b चा बेस c बनतो मग c च्या नंतर तो कसा येतो. So these are the log this thing. Then again the laws are very important in logarithm. You will get a question on this. इसमें से पूछा जा सकता है ह्याच्यातनं क्वेश्चन येऊ शकतो log m into n is equal to log m plus log n. Log m upon n is log m minus log n. Log m raised to n is equal to n log m. Change of base is log m to the base a is equal to log upon log b to the base a. Okay, if I am changing the base to b and this is the way I have to go about it. Inverse logarithmic property a raised to log a to the base. So if I have a raised to log x to the base a, so this is going to be equal eliminated and this becomes equal to x. Okay. Very, very important thing is you cannot find the log of a negative number or 0. So we cannot find logarithmic of negative numbers or 0. There is no rule for finding log of x plus or minus y. It cannot be simplified. हे फार लक्षात ठेवा कारण इतकं आनंद होतो आपल्याला तसे सम्स पाहून की आपण विसरतो की ते रूल जो आहे तो मल्टिप्लिकेशन साठी आहे एडिशन सबट्रैक्शन साठी नहीं है. ओके आप बहुत एक्साइट होकर उसको आंसर मत कर दीजिएगा क्योंकि लॉग के अंदर हमारे पास अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो लॉग ऑफ 20 इज इक्वल टू if something is given like this it means that the base is 10.
बेस जब लिखा नहीं रहता तो उसका मतलब ही होता है कि बेस 10 है. So log 20 is equal to 1.3010. This number before the integer before the decimal is called as characteristics, and the numbers after the decimal are called as mantis. Characteristics is one less than number of digits to the left. Okay, so when I have 2 over here, this means the number here will be 0. When I have 200 over here, the number will be 2. That is number of digits to the left of the decimal minus 1. Okay. So can I get the answer for this? Okay. Yes. Getting answers? Shall I wait for a second? Okay. Sure. Now I have to find this. So a raised to x is equal to n, and x is equal to log n to the base a. So when I have log n to the base a is equal to x. Now what do I have here? Log of square root of 2 to the base a is equal to 1 by 6. Okay. So from here I know the value of n is equal to square root of 2. Value of x is equal to 1 by 6. So a raised to 1 by 6 is equal to, I'm putting it here. So a raised to 1 by 6 is equal to square root of 2. Okay. Now what I do is I taking powers of 6 on both sides. Okay. On both sides. So हम क्या करेंगे? Because this is 1 by 6, I can't solve it. So I'm saying 1 by 6. This is raised to 6. Okay, I'll just put another color. So I'm raising it to 6. This is equal to square root of 2 raised to 6. Okay. So a raised to 1 by 6 raised to 6. So what it happens? A raised to m raised to n is equal to a raised to m into n. Okay. So what will I have here? I will have a raised to 1 by 6 into 6 is equal to square root of 2. So this becomes 2 raised to 1 by 3, 1 by 2, sorry. Square root of 2 can be written as 2 raised to 1 by 2, and then I'm going to take another bracket raised to 6. Okay. So 1 by 6. 1 by 6 into 6 gives you 6. 6 gets cancelled. Answer is 1. So this becomes A is equal to 1 by 2 into 6. So into 6. So 2 ones are 2 threes. So I get 2 raised to 3. A is equal to 2 raised to 3. So what is the answer? Answer is A is equal to A. Okay. Is everybody following? Please put in the chat box whether or not you're following. Okay. Now this is very important that I know this.
10 raised to 0 is 1. So log of 1 is equal to 0. 10 raised to 1 is equal to 10. Log of 10 is equal to 1. Then 10 raised to 2 is 100, which is log of 100 is equal to 2. And 10 raised to 3 is equal to 1000, which is log of 1000 is 3. So can you relate here? ये 0 है, आंसर 0 है. ये 1 है, आंसर 1 है. ये 2 है, आंसर 2 है. So you will find that whatever your 10 raised to is there, that will be the answer over here. Now 10 raised to minus 1 is 1 by 10, which is equal to 0.1 also. Okay, so you get the answer from this. Okay, now let us go to the chapter on simple equations. Everybody following? Yes, Bhajpreet, Sumit, QQQ. Yeah, very good. Anand, very good afternoon. Good morning, rather. Abhi morning hai na? Okay, 2 minutes. Still morning. Is all clear? Yes. Now, a simple equation in one unknown is in x is a form of ax plus b is equal to 0 is called as a simple equation. Okay. A is constant, B is constant and A is not equal to 0. Because अगर A 0 हो जाएगा तो there will be no terms in x and so it will not be an equation. A simple equation has only one root. So when I have this type of equation, I can solve it. So 4x upon 3 minus 1 is equal to 14 upon 15 x plus 19 upon 5. Okay. So here, what is the denominator? Denominator is also 1. So what I'm going to get? This is 4x minus 3 upon 3 is equal to 14 x upon 15 plus 19 upon 5. So as you can see that the LCM, if I take the LCM is equal to 15. So this becomes what? 4x minus 3 upon 15. So into 5 is equal to 14 of x upon 15 plus 19. 19 threes are 57 upon 50. Okay, so I can simply like use this. So this will become 20x minus 15 is equal to 14x plus 57. And you can solve this and find the value of x. So सर्वात important इथे काय है कि this is minus 1, so this is upon 1. Okay, so upon 1, so that is very important that you know this. Okay, an equation in which highest power of the variable is 1 is called as linear and it is called as equation of degree 1. Higher power is 2, then you say it is quadratic. Higher power 3 is called as cubic. Simple equation in one unknown is ax plus b form. And simultaneous is when we have more than one or equation involving two or more equation in more than two or more variables. So solution to this equations at the point where all the values satisfy all the equations. So when do you say it's a solution? When the solution is satisfying all the equations. Quadratic is of the form ax square plus bx plus c, and where ax square gives the equation a parabolic shape. Now very interesting with quadratic. So we're going to do some sums on this. So you most probably you'll get a sum on this. So let's see. This
this is very important. B square minus 4AC is very important. So you will get over here. So let us try to find out the solution for this. So I'm going to put here the values and I'm going to find out. Okay, so let us do it together, right? Prince, Tanmay, Baswati. Yeah, come on. Now this is here. I have the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. What is the value of A? Value of A is 1. Value of B is minus 5 and value of C is 6. Okay. So here what do I get? This is x minus 6 into x plus 1. Okay, I know this from here. Now let us try to find out whether or not I get the same values or not. So this is equal to minus 5 minus square root of b square minus 4ac. So b square is how much? 25 minus 4ac is 24 upon 2. Okay, so this is minus 5 minus 1 upon 2. So this is minus 6 upon 2 plus, sorry, 25 plus 24. So this is plus 7. This is 49. So this is 7. Okay. So minus 5 minus, this is minus 7. Minus 5 minus 7. So this is minus 12 upon 2, which is equal to minus 6. Okay. And the other will be equal to minus 5 plus 7 upon 2. So this is equal to 2 upon 2, which is equal to 1. So here from here also I can make out that I am getting the same answers. Okay. So this is the way you have to find the solution. Then importantly, more than that, you will get a question on the nature of roots. Okay. So that is very important that you know the nature of roots. So here what do I have? This, if b square minus 4ac is equal to 0, the roots are real and equal. So real and equal. Okay. If b square minus 4ac is greater than 0, then the real roots are real unequal. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव आ रहा है और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालने जाती हूँ तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेते हैं. तो देन वी से दैट द रूट्स आर imaginary. Okay, so if I have this as negative, then it is imaginary. In here also, if the roots are real or unequal, if it is a perfect square, roots are real, rational and unequal. And if b square minus 4ac 0 is not a perfect square, then real, irrational and unequal. Okay. Rational roots occur in conjugate pairs. That is, m plus root n is a root, then m minus root n will also be a root. If what is root? Incidentally, root matlab solution jo hai uska. Whatever the solution is, that. If one root is reciprocal to the other root, then the product is 1. मतलब एक अगर x है और दूसरा 1 by x है तो उसका multiplication is equal to 1. And so C is equal to 8. So what we are doing is we are trying to finish off any theory question that may be asked, and then we'll dive into the actual questions where you will be answering those questions, and then I'll give you time to answer and then I'll discuss them myself. Okay. If one root is equal to the other root but opposite in sign, then their sums is equal to 0. So b upon a is equal to 0, then b is equal to 0. So हे theory questions म्हणून विचारले जाऊ शकतात तुम्हाला. Always sum of roots is equal to minus b by a and product of roots is c by a. So x plus beta is equal to minus b upon and x minus beta, x into beta is equal to c upon a. Okay, simple from there. So here what we are going to do for one sum, at least we are going to try to find out
And I've written all the questions. So how much is for the first question? 1, A is equal to 1, B is equal to -8, and C is equal to 16. Now let us find out B square minus 4AC. B square minus 4AC. Can anybody tell me the answer over here? What is the value of B square minus 4AC? So B is -8 square. So 64 minus 4 into 8 into C is 60. So this is 0. Okay. So if B square minus 4AC is 0, roots are real and equal. So what will be my answer? Roots are real and unequal. Now let us see 3x square minus 8x plus 4. 3x square minus 8x plus 4 is equal to 0. A is equal to 3. B is equal to -8 and C is equal to 4. Okay. So in that case, what do I have? B square minus 4AC. B square is 64 minus 4 into 3 into 4. So this is 16 threes are 48. So this is equal to 64 minus 48, which is equal to 64 minus 48 is equal to 60. So what is happening here? Therefore, that B square minus 4AC is a perfect square. Then the roots are real, rational, and unequal. Okay. Then importantly, how do I construct a quadratic equation? X square plus minus b upon a plus c upon a. So x square minus sum of roots plus into x plus product of roots is equal to 0 is the quadratic equation. Okay. So from here onwards, we are starting with the questions. So let us take a short break of 2 to 3 minutes. And then we come back and we start solving the sums. Okay. And I'll be after the break. Okay. Just keep your calculator, paper, pen, everything ready. What I have done is I have taken a small mock test, 20 questions only. But what I have done, I have put a time to it. मतलब तो क्वेश्चन थांबणार नाहीये तुमच्यासाठी, तो क्वेश्चन पुढे जाणार आहे. ओके. सो आप देखो कि आप में ऐसे कितने लोग को कितना टाइमिंग उससे मतलब आप मैच कर पाते हो. और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जब हम ऑनलाइन करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, टेबल में उतनी जगह चाहिए, मोबाइल पे अगर देख रहे हैं तो शायद आपको ठीक से दिखे ना, तो उसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन अगर आप आइडियल कंडीशन में हैं, आप टेबल पे बैठे हैं, आपके दीदी भैया का किसी का लैपटॉप ऑन है या पीसी ऑन है, तो वहाँ वैसे कर लीजिए। जितने हो सकेंगे उतने हम करने वाले हैं। ओके? So let me take a short break and then we come back and I'll try to give you those questions and then we start with the normal questions. Okay. So I'd like to take up as many questions as possible in this. Then afterwards we are going to do logical reasoning also and statistics also. Okay. Wait, can we take a small break? Jay, sorry, not wait. Shwetali? Yes, madam. Yeah, just 2 minutes break. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No worry.
Okay. Let us continue. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So here are the questions, some of the questions. Now let me see whether I can do that. Um, let's see if I can take this. Can you see the screen now? Yeah. Yes, ma'am. Thank you. I hope everybody is ready with your paper and pen. Okay. So let me start with the questions. जेवढे जमतील तेवढे करायचे आपल्याला. आपल्याला काही टेंशन नहीं घ्यायचंय. कोई टेंशन नहीं लेना नहीं है आपको. बस आप जैसे दिख रहा है वैसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. If A is to B is 3 is to 4 and B is to C is 2 is to 3, find A is to B is to C. जस्ट अपने पास आप उसका आंसर रख लीजिए. I'm just randomly putting in the answers. You have to just do the answers yourself. Okay. If A is to B is 2 is to 3 and B is to C is 4 is to 5. Very good, Baswati. Very nice. Good speed.
Swati, how did you get three numbers? They are asking only about the ratio of two, right? So just be careful with this. They are asking about A is to C. Okay? Yes. No, there's nothing to be sorry. Yes, Tanmay, Prince, yes. Next question. I want every one of you to try and answer, okay? Now, 3A is equal to 2B is equal to 4C. Then A is to B is to C. Now you must have three numbers. Yes, Prince and Tanmay has answered. Others quickly answer. Yeah. Next question. If A is to B is 5 is to 3 and B is to C is 9 is to 5, what is the ratio of A is to C? Very good. So I've put a timer of 1.5 minutes for each question. Okay. Some are saying, yeah, 3 is to 1. Very nice. You're saving on 20 seconds in these questions. Very good. X, Y, Z are in continued proportion. X is to Z is 1 by 4. X is to Y is to Z is equal to how much? Be careful, it is written X is to Z is 1 by 4. B के बारे में बताया नहीं है, X, Y के बारे में बताया नहीं है. Continued proportion is the property that you have to use.
Okay. All of you are saying A? Okay. So what we'll do, we'll stop here. So you got an idea how you are supposed to do this, right? So let us go back here. And so you've got a fair idea. So now these are the types of questions you can have, and you should put a timer yourself. Mobile पे timer लगा दीजिए. 1.5 minutes timer you put. Do not go very small, don't put a timer for 50 seconds, 1 minute. No, give a little time to yourself for practice, and then slowly you decrease the time. वेळ जी देतोय तुम्ही स्वतःला ते हळूहळू करून तुम्ही कमी करा. Okay. So if y plus now let me, I think you have a fair, no, we haven't done this question. Consider system 2x plus 3y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 1. What is the value of y? Okay, that we have to find out. So 2x plus 3y is 13. So 2x plus 3y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 1. So what is y? Y, if I want to find the value of y, I have to eliminate x. म्हणजे काय करायचं, या इक्वेशनला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. So 4x plus 6y is equal to 26. And then I have 4x minus y is equal to 1. So this becomes 5x. Sorry, 5y is equal to 25 and y will be equal to 1, right? So this is the way you have to solve them. So y is equal to 1. Now let me go to, now I think you've understood this. Let me go to we have very less time. Let me take one from linear inequalities. A school has a budget of 50,000 for purchasing books and lab equipments. Okay. And the cost of book is 500 and the cost of lab equipment is set as 2,000. So let us say that X be the number of books and Y be the number of lab equipments. The total amount that I have that I can spend is 50,000. Okay. The school needs to buy at least 10 books. So there is a constraint on the number of books. म्हणजे 10च्या खाली आपण नाही घेऊ शकत. पुस्तकं किती घ्यायची? 10च्या वर. How many books should I buy? More 10 or more than 10? So at least 10. At least 10 म्हणजे कमीत कमी और कम से कम. मम्मी के हाथ के आलू पराठे खाने होते तो हम क्या बोलते हैं, मिनिमम मैं तो 2 खाऊंगी खाऊंगी, है ना. तो वैसे so at least 10 is कम से कम या कमित कमी. So at least 10. So what we are doing is we are saying that what is the constraint? X is greater than or equal to 10. मतलब 10 या 10 से ज्यादा. And y will obviously be 0 or greater than 0 when there is no constraint. What is the constraint on the number of books and equipment set that the school can purchase? So if I'm saying books is X, so one book is costing 500. And if I'm saying talking about lab equipment, which is Y, I'm saying 2,000 rupees for one lab equipment. So total cost will be cost of books into number of books, है ना? जो normal हम लोग करते हैं. Sometimes people get students get very because it's a question on linear inequalities, but you have to use the common sense, common logic that is available to us. Okay, so this will be 500x. X into 500 plus 2000 y. Now there is a limit of 50,000. मतलब मेरे पर्स में 50,000 ही है, उससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकती ना.
अगर सब मुझे कैश में लेना है तो 500x प्लस 2000y इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम मैं कितना खर्चा कर सकती हूँ 50,000, बट आई कैन हैव इट लिटिल लेस ऑल्सो. सो दिस इज द budget constraint, and these are the additional constraint. Okay, I hope you followed this. So I've taken one linear inequality also. Then this is a very important chapter. Please, please, please. It carries the maximum weight, and I want you to do this very well. All the exercises in the study material you should do. All the solved examples also are very important, not the lengthy ones. Okay, जो बड़ा बड़ा है ना वो नहीं आएंगे, लेकिन जो सिंपल वाले हैं और जो हमारे स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज में दिए हैं वो आ सकते हैं. ओके, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट thoroughly. Okay, this is the most important chapter in the QA part of this, in the mathematics part of this. Yes, very good. You people are answered them so well. Okay. Then we have simple interest sums. Here in the simple interest, compound interest, depreciation is something that you must remember. It is the same as compound interest, but A is equal to P 1 plus I raised to N is the normal thing for compound interest formula. But depreciation, we know in accounts that it means that something is losing its value. When something is losing its value, there must be a negative element to it. So this becomes equal to, for depreciation, A is equal to P 1. The negative aspect is minus, okay, minus I raised to N. So this is for depreciation. Okay, this is for depreciation. Okay, so what is A called here? It is also called as scrap value. कधी कधी आपल्याला शब्दच नाही कळत की हे काढायला काय सांगितलं, तर स्क्रॅप व्हॅल्यू. ओके, simple versus compound interest, the difference between simple and compound interest by 2 years if I have, then it will be pi square, the difference between simple and compound interest. When they are talking, sum मध्ये दिलं असतं ना की the difference between the simple and compound interest is 200 rupees. So what does it mean? It is means p into I square. If it is for 3 years, you have 3 pi square plus pi cube. Okay. Terminology is principal, nominal rate of interest. These are important. What is the nominal rate of interest? जो interest rate है bank जो announce करते तो nominal rate है. Whatever is addressed or advertised in the on the bank website, that is the nominal rate of interest. But as a CA, what we are interested in, we are interested in knowing the effective rate of interest. So what we are talking about is the effective rate of interest. So here R effective is what? 1 plus R upon N raised to N. So R effective is equal to 1 plus R upon N raised to N minus 1. Okay. So that will give us the effective rate, which takes the compounding into account. So it takes the compounding into account, and that is why it becomes and where, especially when you are like compounding monthly, quarterly, or or even daily. So that time this is important. Okay. So let us see using a formula. So let's say the bank is offering 12% per year, but the interest is compounded quarterly. So quarterly means how many quarters are there in an year? There are 4 quarters in an year. So I will say 1 plus 0.12. Why have I written 0.12? कारण 12% जे असतं ना, तर 12 upon 100 असतं. So that is why you get 0.12. So 0.12 upon 4 raised to 4. Why this 4? 4 is because there are a number of times the money is getting compounded. So इथे पर जो number यहाँ आएगा वो ये number यहाँ पे आएगा. So this is giving you 12.55. So even the nominal interest rate is 12%, the effective rate is 12.55%. Okay. Then, so we have talked about nominal rate of interest.
we have talked about effective rate of interest. Now let us talk about the real rate of interest. So real rate of interest, we have already done in economics, but still we are revising because we are doing it in the mathematics part of it. So this is inflation. Okay. It takes into account the inflation. So what is the formula? We all know that R real is equal to 1 plus R nominal upon 1 plus inflation, rate of inflation minus 1. Okay. So this is the formula. We know that. So taking the example forward, we had talked about 12%. And if we say the inflation rate is 5%, if I do the calculation, I'm getting 6.67% as the real rate. So even though the advertised is 12%, the effective rate is 12.55, but the 12.55 is no? 12.55, but the real rate of interest, when you calculate, you get it as 6.67 because the inflation is eating into the interest component. So these are the normal formula, compound interest formula. So if I am compounding per day, my n will be 365. So rate of interest will also be divided by 365. So if it is 12 months, that is I'm compounding monthly, then it will be number of conversion period will be 1. That is, this is for 1 year. Okay. So effective rate is 1 plus I raised to n minus 1. So if 5,000 is invested in a term deposit scheme that fetches 6% per annum quarterly. Okay, so this is very important. 6% quarterly. So 6 upon 100 into 4. Okay, so this is how much? 6 upon 400, which is equal to 0.015. Okay, this is my rate of interest. What will the interest after 1 year? What is the effective rate of interest? So effective rate is 1 plus I raised to n. So here, ये जो I है ना, यहीं पे हमें क्वार्टरली का इफेक्ट डालना है. इथे आहे मध्येच आपल्याला, कारण आपलं क्वार्टरली आहे म्हणून. जिथे नाहीये तिथे नाही, पण इथे आहे तर आपल्याला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किती आला? 0.015. So this is 1 plus 0.015 and n is what? Number of quarters. So number of quarters in this case is equal to 4. Okay, so this is 1 plus this minus 1. So you are getting 6.13 as the effective rate of interest. And obviously with this amount of interest, you can always calculate the amount of interest. That was very easy for you. We have already done that in school also. Okay. This is a type of question that may be asked to you. Which is the better investment? 3% per year interest compounded monthly or 3.2% simple interest? They've already given you this formula. 1 plus this raised to 12 is equal to this much. So we know effective rate of interest. So 3% compounded monthly is 3 upon 100 into 12. Here 12 कसे से monthly, there are 12 months in a year. So this is coming to 0.0025. Okay. So that is why over here we have written 1.000025 raised to 12 minus 1. So this is how much? 1.0304, 1.003 minus 4. So 3.04. What is this? This is the compound interest rate compounded monthly. Okay, so less than 3.2, the simple rate is better than the investment. And then CAGR, this is also something that you should read through. Okay. So CAGR T0 TN is VTN. So this is VTN raised to 1 upon Tn minus T0 upon VT0 minus 1. Okay. So that is VTN raised to okay. Yes. So this is a simple sum that is done in the book. So maximum you can get this type of sums.
applications. I've just put it so that if there any theory question comes on this, you can easily, whether CAGR is used for like funds and performances. So yes, it is used. The important thing now is annuity, payment of life insurance. So what is annuity? It is a payment of life insurance, rent of your house, payment of house loan, where you have to make periodic payments. Okay. So to be called an annuity, a series of payment must follow the following features. The amount paid must be constant. मतलब वो उतना ही पैसा हर महीने या हर पीरियड में हमें भरना है. Over the period of the annuity, time interval between two consecutive payments must be same. मतलब if there are 12 months in a year, so month 1, 2, 3, 4, 5, 6. So month 1, 2, 3. So every day, every month, suppose I have to make a payment of 2000. So then this is called as annuity because the amount is also remaining the same and the time interval between two payments is also remaining the same. Now what happens? Okay. What happens if it is not a single amount, but there is a regular amount to be paid or received? So the formula for annuity regular is this. A is 1 plus I raised to n minus 1 upon I. So A into 1 plus I raised to n minus 1 upon I. Okay. So usually this 1 plus I raised to n मोठा असेल तर तुम्हाला दिलेला असेल सम मध्ये, so you don't have to worry. See, many times, we shy away from attempting mathematics of finance because we say, अरे अभी जैसे this last sum we had this, no? This 1.0025 raised to 12. So you can also do it on the calculator. Okay. So many times it will be given to you, or if you need to do, you have to just keep on pressing the multiplication button. But usually with these large quite a amount of data, they will always give you the answer. So what you must remember is you must know the formula. So that is 1 plus I raised to n minus 1 upon I. So this is something that you should know how to find. So the formula for annuity, that is for, also remember, this formula is there for end of the period. Okay, there are two sums. Okay, two types of sums. One is at end of the period and the other is at the beginning of the period. So I have to pay a single amount, a regular amount, the same amount at regular intervals. So then this formula will be applicable. Mathematics of finance, you have to be very, very clear on which formula you will have to apply. Now, future value of the annuity due or annuity immediate means क्या, payment is just at the beginning. शुरू में ही जब पेमेंट करायचं असेल तर मग त्यावेळा आपण हे फ्युचर व्हॅल्यू ऑफ एन्युटी इमिजिएट हा शब्द वापरतो. ओके, इमिजिएट. Okay. So what do? We'll find the future value annuity as if it is an annual ordinary annuity. 1 plus I raised to n minus 1 upon I. Okay. We are going to use this formula and then multiply the result by 1 plus I. Okay. So you'll multiply by 1 plus I. Then PV of a cash flow, present value of a cash flow is, the present value will be equal to, this is the normal formula for compound interest. A is equal to P into 1 plus I raised to n. So what will be P? P will be equal to A 1 plus I raised to n. Okay. So this will give you the present value of the amount n. So this is a single amount thing that we want to know. Okay. Then PV of an annuity regular will give you V is equal to A 1 plus I raised to n minus 1 I into 1 plus I raised to n. So we have this is equal to A 1 plus I raised to n minus 1 upon I, and very importantly is just one term add हुई है उसमें. काही घाबरायचं कारण नहीं. This is 1 plus I raised to n. Okay. It is one and the same thing. Okay. So you will get A is equal to V upon P N I. So this will be useful in the formula problem for amortization. So that you will get how much amount I must invest
so that I can get a corpus. Okay, so or I've taken a loan, and then how much amount should I pay so that the loan can be like I'm able to finish off the loan. So same thing, annuity immediate if you have, then you have to find it for n minus 1. वहां पे कैसा था, वहां पे n को ही निकाला था और 1 plus i से मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पे क्या है, यहाँ n नहीं ले रहे, हम n minus 1 ले रहे हैं. तो यहाँ पे you must know that you have to take n minus 1. Sinking fund is an account set up to build enough funds over time to repay a future debt. So what happens is, suppose in a like most of us live in flats. So if we know that after 5 years or 10 years, I need to repaint the building. So the repaint of the building will go into many lakhs of rupees, and then at that point of time, people will not be in a position to dole out that kind of money. So what we do is we create a sinking fund. So that if after 5 years I'm requiring 12 lakh of rupees, so what I do is I calculate the maintenance amount that I should take for the sinking fund. So the amount that is collected for sinking fund goes into a different bank account, and the money is kept over there, so that after 5 years, when I want to actually paint, what do I do at that time is I'm able to take that money and use it for the thing that I have decided. So in this case, we have decided on painting the building. So lessor is the owner of the asset, lessee is the person leasing the asset. Okay. So you can use this chapter for capital expenditure decision, so that here we decide whether we want to buy the asset or we want to take it on rent. Valuation is a debt security in which the issuer owns the holder a debt and is obliged to repay the principal as well as interest. Okay. Then we have perpetuity. Okay. These are the important formula that you must remember is number of permutations of n number different things taken all n things at a time is given by npn, which is equal to n factorial. Okay. If I'm out of n, if I'm choosing r, then we have npr, which is equal to n factorial upon n minus r factorial. Okay. And third is 0 factorial is always equal to 1. Then circular permutation, the number of circular permutation of n different things is taken as n minus 1 factorial. Okay. And the number of necklace is given by n minus 1 factorial upon half. So 1 by 2. Okay. The number of ways of arranging n persons along a round table so that no two persons have the same neighbors is again the same formula. So if I'm arranging people around a round table so that they do not ever have the same neighbors, so that is n minus 1 factorial upon 2. And in case of necklaces, how many necklaces can I make with n beads? It will be n minus 1 factorial upon 2. Then these are the formula that you must know. Number of permutations of n distinct objects taken r at a time is given by n minus 1 PR. When a particular object is not taken in any arrangement, so एक चीज है वो हम लेने ही नहीं वाले, तो हमारे पास अगर 10 चीजें हैं उसमें से एक निकाल दिया तो 9 चीजें बचेंगी. उन 9 चीजें में से मुझे 8 चीजें लेनी है, तो इसीलिए मैं उसको n minus 1 PR करती हूँ. Then we have combinations, properties. So these are the typical formulae that we must remember. This is from Saransh, so you can refer to the Saransh also. Now let us go to the sums, because that is the part that you're most interested in.
After this, which chapter do you want me to take? Can you put in the chat box? Do you want me to go to statistics portion or LR? You would like me to take some LR, blood relations or something like that. So you can just put it so I can take, because it's very difficult to like in 2 to 3 hours. How can we finish off the whole thing? Or we can stick to only mathematics, and then if if you wish, you can request the branch. Then we can hold a statistics and LR session separately. Okay. So whatever is you're interested in, please let me know. A group of 8 students needs to select a president. Let me go here. A group of 8 students need to select a president, secretary, and treasurer. If no student can hold more than one position and all students are eligible for any position, how many ways can they do it? Okay. So now 8 students are there. So any of them can become the presidents. So one student has become the president. So I have one president. So obviously there are 7 students left. Out of the 7 students, one is becomes a secretary. 6 are left. Out of the 6 students, one becomes the treasurer. So how much is this? This is 336. So there are 336 ways in which you can choose a president, a secretary, and a treasurer. Okay. तन्मय नेक्स्ट सेशन अभी 2 बजे आपका इसका है, अकाउंट्स का है. ठीक है. सो आई डोंट हैव द फुल डे सेशन. आई हैव दिस सेशन. So we'll go with maths. Yes, fine. So at least we'll complete one thing very well. Okay. Next question is how many different ways can 6 people be seated in a circular arrangement where rotation of the same arrangements are considered as identical? So means what? So this is n minus 1 factorial. Okay. So 6 people can be seated in a circular arrangement where rotation of the same arrangement is considered as ideal. So it is not that we do not want to have the same neighbors. Okay. तो जर प्रश्न आला की सेम नेबर्स नकोय तेव्हा n-1 फॅक्टोरियल अपॉन 2 येतं. पण इथे नुसतं म्हटलंय की सेम अरेंजमेंटला आयडेंटिकल समजलं जाईल, मग त्या केसमध्ये किती होतं n-1 फॅक्टोरियल. सो हियर वी हॅव 6 पीपल. सो 6 minus 1 is 5 factorial. So 5 factorial is 120. So I hope you remember 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720. Okay. So at least up to 10 you should know, so that you don't spend time multiplying. हे तोंडपाठच पाहिजे 10 पर्यंत. ओके. सो त्याच्याने काय होईल, तुम्हाला आन्सर करायला पण सोपंच आहे. Yes, Tanmay, you just have to request the branch. We can have a separate session for statistics and LR. Okay. A box contains 4 red, 3 blue, and 2 green balls. In how many ways can 3 balls be selected if exactly 1 ball of each color must be selected? Okay. So you have 4 red balls. 1 ball I can select from 4 red balls in 4C1 ways. 3 blue balls. So 3C1 and 2 green balls. So that is 2C1. So I have to select all of them, like 1 red, 1 blue, 1 green. So what will happen? 4C1 into 3C1 into 2C1. Okay. You remember the and or rule? Okay. So just keep that in mind while doing this. So 4C1 is 4. 3C1 is 3, 2C1 is 2. So this is 24 to the 12 to the 24. Okay. Now, how many different 5 letters words can be made using all the letters of the word happy, considering that P appears twice? So what do I have? N is 5 because 1, 2, 3, 4, 5. So N is 5. But we have 2 P's. Okay. So what do I have? Pi C. 5 factorial upon 2 factorial.
because this is identical number, that is P is repeated. So therefore this is going to give me 60 types of arrangement. So because the number is repeated, so you are getting this answer. Okay. A committee of 4 people needs to be formed from a group of 7 men and 5 women. If the committee must have at least 2 women, how many different ways can it be formed? Okay. So there is no restriction, you can even have questions where X is not going to work with Y, or X will work only if Y is there. So this is a simple one. A committee of 4 people needs to be formed from a group of 7 men. Okay. So men, women. So total is 7, and women, number of women is 5. If the committee must have at least 2 women. Okay. So what are the various scenarios? Okay. If I have 2 women, then because the total is 4, so this will be 2. Okay. Then second scenario, that is option 1, option 2. I can have at least 2, na? So 2 se zyada bhi ho sakte, so 3. Then this becomes 1. Can I go further? This is 4 and 0. So you can have an all women's committee also, but this is very rare. Usually you'll get at least 1 man, at least 2 men, that kind of thing. But here you must know this. So what do I have here is 7C2 into 5C2 plus 7C1 into 5C3 plus 5C4. Okay. So if I solve this, I get 350 ways. So can you imagine how much big this is? That just want to make a committee out of 7 men and 5 women, and I have 350 different options to choose from. Okay. Then chapter on sequences and series, that this is also very scoring topic. So we could have that. So you have the nth term Tn is given by a plus n minus 1 into d, and thus Sn, that is the sum of the series, is given by n a plus l. What is a? A is the first term, l is the last term, divided by 2. Okay, and another way you can have the sum of the series is n by 2 twice a plus n minus 1 into d. Okay, so this way you can find. This is very, very important. Sum of first n natural numbers is n into n plus 1 upon 2. Sum of first n odd numbers is equal to 1 plus 3 plus 5 is n square. Sum of the squares of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So I have 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. This sum of cubes is n into n plus 1 upon 2 the whole square. म्हणजे हे जे पहिला फॉर्म्युला ना त्याचा स्क्वेअर होत आहे. Then 3 numbers of AP should be taken as A minus D, A and A plus D. And then you find out the values of A and D. Geometric progression. Okay. So anytime you will see this type of sum, you should be able to solve this. Because Tn is AR raised to n minus 1. So I have AR square, AR cube, and so on. So where A is the first number and R is the ratio, common ratio. Okay. Again, you have here, these are the formulas. So if my R is less than 1, then my Sn is equal to A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. Obviously, when R is small, I'm subtracting it from 1. When R is greater, I'm subtracting 1 from that number. So when R is greater than 1, then I'm using A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. Okay. This is very important. This you should know when simply
even in 20 seconds, you will be able to answer this question. If series is infinite, sum of the GPAs, if n is going to infinity, then I will have S infinite is equal to A into 1 minus R, provided R is less than 1. R less than 1 होगा तो ही यह आप सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला से. If R is greater than 1, तो obviously it is going to infinity, so it means it makes no sense. Geometric progression and geometric mean, B square is equal to A into C. So three numbers in GP should be taken as A upon R, A and AR. Five numbers, you don't have to bother so much. You must know at least this much. And you must know that geometric mean B square is equal to A into C. Okay. In an arithmetic progression, the first term is 5 and the common difference is 3. What is the eighth term? So T8 is equal to A plus 7D. So A is how much? First term is 5, common difference is 3. So this is 21 plus 5, so this is 26. Okay, so simple direct questions may also be asked here. Now the sum of first natural numbers is given by the formula n into n plus 1 upon 2. What is the sum of first 10 natural numbers? It will be 10 into 11 upon 2. So 2 ones are, 2 fives are, so this becomes answer is 55. In a geometric progression, if the first term A is 2, so A is 2, common ratio R is 3. R is 3 is greater than 1, so what is my formula? So I have T4 to be equal to A into AR raised to n minus 1. You're talking about the term. A R raised to n minus 1. So A is 2, R is 3, 3 raised to fourth term. So this is 3. So that is 3 cube is 27. 27 into 2 is 54. Okay. Yeah. So similarly, you can find out. Then there is sets relation and functions. Which the following correctly describes a set with Rooster notation but is incorrect while using the set builder notation. So both types of notations are given in this question and you are being asked to find out which of them is the correct one. So let us see. So this B. So 1, 3, 5, 7, 9 is a set of odd numbers. So this is equal to 2n minus 1. Okay. So 2n minus 1 or 2x minus 1, where x is lying between 0 and 6 is the correct answer. So B will be the correct answer. This is also important. If 1, 2, 3, how many proper subset does it contain? So that also question you should be able to do. Now, this is what is A cross B. Remember, A cross B is a set of ordered pairs. So, I have 1, 2, 3, 4, 5. So, this is 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, and 3, 4, 3, 5. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many are there? 6. Okay. Then differentiation and integration. So, remember, okay. Let me tell you, do not put this chapter in option because
very simple sums you can get from there, direct questions also you can get from there. आपको इतना बुरा लगेगा क्योंकि जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है ना वो डीप में पूछा जा सकता है. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत स्टडी मटेरियल के बाहर आपको ज्यादा पूछेंगे नहीं. तो यू शुड स्टिक to this and you should get those 2 to 5 4 marks whatever the allotted at that time will be. You should be able to tap that. हा चॅप्टर कृपया तुम्ही जास्ती ऑप्शनला टाकू नका. सिंपल वाले क्वेश्चन्स तरी करून जा. ठीक आहे. आता खूप जास्ती जर डिफरन्सिएशन बाय पार्ट असेल, इंटिग्रेशन बाय पार्ट असेल तर मे बी ते तुम्हाला जर अवघड वाटत असेल तर सोडा. पण सिंपल थिंग लाईक व्हॉट इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल, तर यू जस्ट हॅव टू टिक दिस राईट. They will ask you and they will just have to put limit delta x tending to 0. Means you are trying to reduce this, then you have x plus delta x minus fx upon delta x. So that, like, suppose I want to find the area under the curve. So what happens here, I'm not able to find it like this because it's neither a square, neither a rectangle. So what I do, I make small strips. And I find those areas. जेव्हा आपण खूप छोट्या अंतरावर जातो ना, तर as good as a straight line होऊन जाते, तो कर्व नाही राहत. तर as if we are finding the area of those rectangles, and that we are using as the first principle. Okay, differentiation. These are the formula. Like suppose they ask you find the d by dx of 5x cube. Okay, so त्याच्यात काय, हा आपण हा फॉर्म्युला वापरणार आणि त्याच्यानंतर म्हणणार की जर माझ्याकडे एखादा हे आहे कॉन्स्टंट आहे तर तो मी बाहेर काढू शकतो. सो दिस बिकम्स 5 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. ओके, नाउ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स रेस टू एन इज n x raised to n minus 1. So this will be 5 into 3x square. So this is equal to 15x square. Okay. So this type of ways you must be able to answer them. Okay. And these are the different rules. Okay. The most important is here division. So इथे काय लक्षात ठेवायचं, मी नेहमी स्टुडंट्सला सांगते की this I should write it as the derivative of this function should be written as second function whole square. Second function into derivative of first function minus first function into derivative of second function. Derivative of second function. Okay. So if you remember in words, it becomes easier for you to remember. Okay. Similarly, for integration, like this formula is what we will mostly need, a raised to x dx, and then d by dx of 1 upon x will be log x plus c. Okay. Okay. Now remember, for integration, you will not be using the whole of the islet rule, so you will not have inverse and you will not have trigonometry. All you have to remember is logarithmic, algebraic, and exponential. तर सिंपल सम्स येणार, एकदम सिंपल सम्स येणार आहे, तर तुम्ही as far as possible त्याला हे करू नका. इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटिग्रल ऑफ uv, I will also write it as first function into and second function. Integration is equal to first function into integration of second function minus integral of derivative of first function into integral of second function. Okay, and dx. So you should be able to solve this. And these are the different rules. Remember to, this is also important, finite and differential integral, sorry. So, and this is called a symmetric property of definite integral. So, integral a to b can be written as minus integral b to a. And this is one sum. I'll be putting it in the, I'll be sending it to the branch so you can like, here you can solve it and see. This is where you are using the technique of 2i. But becomes difficult with the time constraint that you have. So इतना difficult पूछेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये formula बहुत important है, तो formula पूछ सकते हैं.
The derivative of fx at a point represents the area under the curve, the slope of the tangent, the volume, or the inverse. So it represents what? The slope of the tangent. D by dx is what? It is the slope of the tangent at, at a particular point. What is the correct derivative of a raised to x? A raised to x will be equal to a raised to x log a. But here, okay, yeah, they may ask you a raised to x, then log a to the base. It is the base is e and not 10. Okay, it does not have the common base, it has the exponential base. Yeah. A simple question like this: the derivative of x raised to n is x raised to n, and derivative d by dx of x raised to n, this is equal to n into x raised to n minus 1. Okay. This is all we have for mathematics. Okay. So if we get a chance, I will see if we can work it out. So we can have it for LR as well as statistics also. But mathematics is a portion which is so important that you have to apply it in the statistics portion. And statistics is something I think you people are more comfortable with. So I had requested for a special session for mathematics. I hope you are able to make use of the this thing. I think Shwetali ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, I welcome Omkar Gadgi, C. Omkar Gadgi, sir, Chairman of Thane branch, and I request Omkar, sir, to address students. Very good afternoon, all of you. Thank you so much, and thank you, madam, for the very insightful and detailed lecture. Although I was listening to it very patiently for the last 10-15 minutes, and I'm very Thank you, sure sir. that Thank honored. all the students must have got their doubts cleared on the brink of their examinations. Now they are standing. So to all the students, it's really good that that this is the times that now the various branches are collaborating through the social media platform where we are able to also learn without the geographical distinguishing places that where we are actually located, distinguished places where we are located, but still it's good that we are able to learn. We have very great faculties like madam herself and many other faculties who have been working tirelessly for your as well as other branches, and I only would say that try to take the maximum benefit out of this, get your doubts cleared session, keep coming for the ICI sessions whenever it is possible for you, and we will also ensure that we give the maximum possible help all what we can so that you can go and face your exams boldly. And end of the day, as I always believe that your efforts are the most important thing. The results will be byproduct based on your efforts, and therefore try to face the exams very boldly, try to answer all your questions, as many questions possible, I would say. And this is a CA exam, so this has its own challenges, this has its own flavors and tastes. So there is nothing to be pessimistic about, but one has to be extremely practical about this exam and the results what this exam gives. So I would definitely wish all of you the best of luck for your exams. Take it in the best spirit as you can. I would also at the same time say that these days we have a lot of students who are coming to us who say that we have never failed in our exams, we have never failed in till our entire life, we've been very good scoring students. It's always a case when it happens that when we come to the extremely high level competitive exams, the results are going to be competitive, and therefore we have to take it in that spirit. So do not get disheartened even if something goes wrong here and there with the results. That's just a part and parcel of this entire course. And when I say, I would also mention that I myself have been able to clear the exam in the third attempt, but I don't find any shame in admitting that, because whatever it is, when we go today, nobody asks us in which exam, which attempt you cleared. So keep your hard work and dedication on. The results will come your way.
And once again, I wish you all the very best, and I thank the faculty. Over to you, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, Omkar. And I really thank you. I really want to thank Rashmi ma'am also for this insightful and session. Thank you, ma'am. Thank you, Thank sir. you. Thank Thank you. you. All the very best to all of you who are there. Do well. Keep yourself hydrated. Okay. So I request students to join at 1:30 p.m. for account session, which is taken by Minister CA Sanket Shah, sir. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
वैभव, संकेत सर, वैभव, हा मॅम. हॅलो हॅलो. हा, करूया स्टार्ट आपण सेशन. हो, एकच मिनिट मॅडम. हा, तोपर्यंत वैभव वेलकम आणि इंट्रोडक्शन देईल, चालेल सर? हो हो. येस वैभव, यू कॅन एक स्टार्ट. लाईट लाव रे सांगा. ओके. हो हो. Very good afternoon to everyone. I hope you all had a refreshing break. Let's gear up for our second session of accounts revision. We are privileged to have with us CS Sanket Shah sir, who will be guiding us through this session. Accounts is most important subject for scoring good marks and in practical life also. And for such interesting subject, we have a interesting faculty, CS Sanket sir with us. CS Sanket sir is chartered accountant by qualification and a passionate educator with over 15 years of experience. Specializes in CA foundation and intermediate subject with a strong focus on conceptual clarity and exam-oriented strategies. Known for delivering simplified, student-friendly notes and interactive teaching methods. Sir is dedicated to guiding students not just academically but towards becoming confident and capable professionals. Sir believes in a philosophy. Education is more. Education is about building capabilities and not just clearing exams. So I request CS Sanket Shah sir to kindly take over and continue the momentum. Over to you, sir. Thank you, Vaibhav, and thank you, Pune branch of ICI, including Goa branch. So I'm glad to discuss this strategy about 1 minute. Huh? Yes. Audible, hai na? Yes, sir. Yes. Okay. So today, what is the expectation of this session? What we are going to do here, we are going to discuss the mock test paper, which recently uploaded by the institute, and many of you have already given this mock test series paper. So we'll discuss it in that way only. तो हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं. सो सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, लेक्चर विल बी इन हिंदी प्लस इंग्लिश, सो डू नॉट वरी. Yes, Vaibhav, you can mute yourself, no problem. Okay. Yes, good afternoon, madam, all of you. तो आज के सेशन में आप लोगों को मैं ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जो भी मॉक टेस्ट का हमारा पेपर आया था वो कैसे सॉल्व करना था. आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस बाय यूजिंग दी स्टॉपवॉच टेक्निक. Those questions which are very difficult one, which are very easy one, you can do on question itself. So that I'm not going to discuss. We'll have a session of 2 hours. So many students have, they prepare themselves, but the problem is that they don't know how to appear in the exam, what to do in first 15 minutes. That strategy is also we are going to discuss. तो ये ध्यान में रखो. Yes, Sumit, today you cannot discuss it on Zoom. तो जो भी सेशन है, we are going to take it on live session only. तो आप लोगों को Zoom पे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा. 1 minute, हाँ बेटा. तो फर्स्ट 15 मिनट्स की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर को कैसे डिस्कस करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये मॉक टेस्ट में आए थे. हो सकता है तो वील कंटिन्यू विद द मॉक टेस्ट सीरीज पेपर 2 आल्सो. एंड one important announcement is that I'm going to take your marathon session also for 4 days. लगातार 3 days तो भी मैराथन सेशन आई विल कंटिन्यू विद द पुणे ब्रांच ऑफ आईसीआई. तो ये हमारे पास सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप लोगों को एग्जाम के पहले भी मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा. सो स्टूडेंट्स, लास्ट दिन तक मैं आपके साथ डटा रहूंगा. यस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट है, अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स लोगों को ये बताइए, सो दैट वी कैन टेक अ बेनिफिट. एक ही मिनट, मैं सिर्फ आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, तो कमेंट्स के लिए मुझे, हाँ जी,
ओके, ठीक है। सो हाउ मेनी आर देयर बेटा? से गुड गुड आफ्टरनून। ईशा है, आनंद है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 15 मिनट्स। और इधर मेरे पास अमर, सुमित, अमर बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इस पे भी ज्वाइन है, जो लोग मुझे देख पा रहे हैं। यस, कंटिन्यू। देखो, मॉक टेस्ट पेपर 1, सीरीज 1, जो आई थिंक 25th को हुआ था शायद से, या 24th को हुआ था, 22 तारीख को हुआ था, हाँ जी, 22 तारीख को हुआ था मॉक टेस्ट पेपर। हाँ जी, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज योर ओरिजिनल पेपर। टाइमिंग 2 PM to 5 PM, तो ये तो मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि हमारा पेपर टाइमिंग जो होता है वो 2 PM to 5 PM रहता है। एंड मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि बहुत बार देखते नहीं है, दिस हैपन्स बिकॉज यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। सो जब भी 15 मिनट्स मिलते हैं तो फर्स्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। देखो, मैं बैठा हुआ हूँ एग्जाम में, एंड इफ आई वांट टू डिस्कस दिस, तो मैं कैसे डिस्कस करूंगा? ये आज क्यों जूम क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्या किया हमारे बंदे ने? जूम का हो नास। यस बेटा। हम्म, एक सेकंड ना, जूम हो नहीं रहा है, सो एक ही मिनट। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि फर्स्ट 15 मिनट्स में व्हाट यू टू डिसाइड, यू टू डिसाइड द सीक्वेंस। सी, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, तो क्वेश्चन 1 थोड़ा सा है ना, आफ्टर 1.5 आवर सॉल्व कीजिए, आफ्टर 1.5 आवर। एंड जो बाकी का क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्टिंग में ही, कंटिन्यूएशन में यू डिसाइड द सीक्वेंस। जहां पे आपको लग रहा है कि सर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन देखा नहीं था, तो ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, तो वो क्वेश्चन मत कीजिए। जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखे हुए थे वो क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए। तो वही स्ट्रेटेजी हम लोग आज डिसाइड करेंगे कि कैसे अपने को पेपर को अपेयर होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कब सॉल्व करना है? आफ्टर 1.5 आवर। यस, आफ्टर 1.5 आवर्स। हाँ, 3:30 4 बजे तक खत्म। क्वेश्चन 2 देख सकते हो आप, 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये पहले तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन पिक करने के पहले 10 बार सोचना, क्योंकि कैलकुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बीआरएस का है, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा एंड में ही रखिए। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो ये आसान रहेगा, स्टार्ट इससे करना। 10-10 मार्क के क्वेश्चन से, यू कैन सी हियर। अगेन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बट नॉर्मल प्रॉब्लम दिख रहा है। देन ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बनानी है, सो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, सस्पेंस अकाउंट मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन है, जहां पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा गया है। कंपनी फाइनल अकाउंट्स घेऊन जाना। एंड क्वेश्चन 6 कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन है कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क के लिए। और 10-10 मार्क के लिए क्वेश्चन जो थे वो आपने देख ही लिए रहेंगे। बेटा, पेपर देखने के बाद मुझे, मैं यदि आपके जगह पे रहता, तो मैंने डेप्रिसिएशन से शुरू करने से अच्छा आई विल स्टार्ट फ्रॉम दी पार्टनरशिप। ये मुझे क्वेश्चन लग रहा है कि ये ज़्यादा इजी जाएगा सॉल्व करना। हालांकि एग्जाम में
तो मैं 3A से आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिकॉज ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है विच इज एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज इजी. ओके. एक ही मिनट. हाँ बेटा, हे एंड साले. नहीं है अच्छा. देख लीजिए, ये देखो ये दिख रहा है क्या इनको? देखिए चालू है क्या? मेरे इसमें नहीं आ रहा है. एक बार चेक कीजिए. किस पे देख रहे हैं आप? ओके, स्टार्ट है ना? हाँ. बेटा आप बीच बीच में कमेंट्स करते रहो ताकि मुझे समझ में आए कि दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है. सो मेनी स्टूडेंट्स, यस. ओके, थर्ड क्वेश्चन से शुरू करेंगे. On 31st March 2025, the trial balance of Mr. Black was given below. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां पे जाएगा? तो बेटा रॉ मटेरियल आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाने वाला है, एज यू आर अवेयर. ओके. नेक्स्ट वन इज वर्क इन प्रोग्रेस. कहां पे जाने वाला है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. वन मोर टाइम. फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. डेटर्स वी विल इग्नोर बिकॉज ओनली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट इज आस्क. देखो बैलेंस शीट नहीं पूछा है, सो बी प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट मत बनाओ, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे. कैरेज ऑन परचेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा बेटा, ये भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा. बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट का आइटम है, इग्नोर करेंगे. वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सैलरी P&L, दोनों भी P&L, बैलेंस शीट ऑफ इग्नोर. रिपेयर्स ऑफ प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्लांट रिलेटेड होगा बिकॉज प्लांट वी विल कंटिन्यू विद द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. परचेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी इग्नोर. और ये तीनों भी नॉर्मली P&L में जाते हैं, प्राइमा फेसिया P&L देखते बाद में. सन्ड्री क्रेडिटर्स इग्नोर इग्नोर. सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कमीशन P&L. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी P&L में जाएगा. ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन है ये. कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक ओडी बैलेंस शीट, तो ये इग्नोर करेंगे. नाउ बेटा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP, ये दोनों, ये एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाने वाला है. रॉ मटेरियल मनो अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. तो ये क्वेश्चन में कौन सा आइटम किधर जाएगा ये आपको देखना है. सुमित टिकटिकी जी इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि 2 घंटे में पूरा मुझे सेशन कंप्लीट करना है. तो कोई कोई क्वेश्चंस में लिख के बताऊंगा जो बहुत बड़े क्वेश्चंस है तो टाइम लगा के, कुछ क्वेश्चंस हम लोग समझ लेंगे कि क्या करना है. सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी में हाउ मच यू हैव टू ऐड? 9,000. एंड वेजेस में 20,000. 9,000 आई एम गोइंग टू ऐड, वेजेस 20,000.
रेंट 3/4 1/4 टू द ऑफिस, रेंट 3/4 फैक्ट्री को जाएगा, मतलब ये मनो अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 3/4 मीन्स 45,000 and 15,000 in P&L. You can check this. And lighting 2/3. 2/3 means 13,500 divided by 3 into 2, 9,000 in manufacturing account, and 1/3 in P&L, that is 4,500. You are asked to prepare trading account, manufacturing account and P&L account. वेरी सिंपल, ऑलरेडी मैंने बता दिया कौन सा कहां पे जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आंसर, चेक कर लो आंसर। एग्जाम में इट इज वेरी सिंपल, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज टिक टिक जी टेक्निक फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी सिंपल एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। तो देखिए आंसर, रॉ मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, यू कैन सी रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखना है आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनर कॉलम में 2,10,000। WIP वो भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 95,000, आउटर कॉलम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। नेक्स्ट फिनिश गुड्स, ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में फिनिश गुड्स 1,55,000। यस, सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा। कैरेज ऑन परचेसेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 15,000। Then you have bills receivable, ignore. Wages 1,30,000 plus 20,000. You will write wages 1,50,000 in manufacturing account. Yes, correct. Salary you will write 1,09,000 in P&L. So salary, yes, ये भी correct है, 1,09,000. Telephone repairs 10,000 and 3,500. ये P&L में जाएगा। Purchases 8,50,000. You will write it ट्रेडिंग डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा। रेंट, लाइटिंग, रेंट का 45,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यस वेरी गुड, एंड 15,000 रेंट इज P&L अकाउंट। सेम लाइटिंग P&L में 4,500 एंड मैन्युफैक्चरिंग में लाइटिंग 9,000। कुछ भूल गया क्या मैं? टेलीफोन हुआ, ये हुआ। हाँ, रिपेयर्स टू प्लांट, रिपेयर्स टू प्लांट आई फॉरगॉट, आई थिंक 11,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एंड योर जनरल एक्सपेंसेस 15,000। एक ही भूल गया था मैं, ऑफिस फर्नीचर के बाद रिपेयर्स, यस 3,500 कर लिया ना। हाँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन में गलती हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट बैलेंस है, और इंस्टीट्यूट ने आंसर देते टाइम इसको गलत हो गया है हमारे से। मैं ये बोलूंगा कि एक बार मैं मैम को चेक करने लगाऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट बैलेंस था, पर लिखते टाइम वो डेबिट में आया है, तो ये गलत है एक्चुअली आंसर। तो आपका नेट प्रॉफिट भी अलग आने वाला है, ये ध्यान में रखिए। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स ये आपका क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, ना कि डेबिट साइड में, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में इसको क्रेडिट बैलेंस है। तो ये इंस्टीट्यूट ने आंसर गलत दिया है। सजेस्टेड आंसर में होता है बेटा, नजरअंदाज में ये चीज हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्वेश्चन 3A में हमने आंसर्स में आपको P&L के डेबिट में दिया है, हालांकि ये क्रेडिट का आइटम था। ओके, मैं रेक्टिफिकेशन POS को बोल देता हूं करने को, थोड़ी सी गलती हो गई है हमारे से। तो
एज्यूम करेंगे कि पिछले साल का ही बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को P&L के क्रेडिट साइड में लिखना था, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, गलती से डेबिट में लिखा गया है, उसके वजह से नेट प्रॉफिट बदल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट 16,500 से और प्लस 16,500 से मतलब टोटल 33,000 से ऐड कर दीजिए। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां पे लिखना चाहिए था। ओके, एंड 4,09,000 प्लस 32,000 33,000, तो आपका फाइनल नेट प्रॉफिट 4,42,000 आना चाहिए था। 4,42,000 आना चाहिए था। ओके, तो ये सिर्फ चेंज करवा दो। हाँ जी, होता है कभी कभार, आई वोंट ब्लेम कि तुरंत 15,000 हो गया। यस, एक ही मिनट, हाँ बेटा, एक ही मिनट। वो आपको डेबिट बैलेंस दिखेगा, वो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट होगा तो P&L के क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। यस, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ। जो भी गलती हुआ है, यस, आई जस्ट इन्फॉर्म इट। ठीक है, तो एनी कमेंट ऑन दिस बेटा? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, यू कैन आस्क मी, एक बार बता दीजिए। यस, इम्प्रूव दी क्वालिटी मतलब ईशा क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ दिक्कतें आ रही है आपको? ओके, ठीक है, मैं देखता हूं, मैं इसको जूम कर दूंगा। ईशा बेटा, नाउ इट्स क्लियर और नॉट येट? ठीक है, सो आगे सेल्स को वेयर वी आर गोइंग टू राइट, सेल ऑफ स्क्रैप वी आर गोइंग टू राइट इट इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, 25,000 on the credit side. You already aware this. सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। कमीशन रिसीव्ड P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कमीशन रिसीव्ड वेयर टू राइट, P&L के क्रेडिट साइड में। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो गलत हो गया है, सेल्स सेल्स वी आर गोइंग टू राइट इट इन P&L। बैंक कोडी नेवर बेटा, वी आर राइटिंग इट इन दी बैलेंस शीट का आइटम है वो, तो इधर नहीं लिखेंगे। रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट यहां पे आएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट, एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड विच विल इग्नोर। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड बैलेंस शीट में दूसरा इफेक्ट। एंड लास्ट वन इज वर्क इन प्रोग्रेस 78,000, वेयर टू रिकॉर्ड दिस 78,000? we will record 78,000 in closing stock of work in progress manufacturing account credit side. You can check here, balancing figure is known as cost of manufacturing, that is cost of production. आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, एंड देन वी विल कैलकुलेट जीपी, and GP we will write it on the credit side by of P&L account,
यहाँ पे आ जाएगा एंड बैलेंसिंग फिगर वी विल कॉल इट एज नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट अपना 4,42,000 हो जाएगा. नेट प्रॉफिट विल बी 4,42,000. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एक गलती हो गया है बस, बट ठीक है. तो जो भी बच्चों को ये सजेस्टेड आंसर में गलती से डेबिट आ गया है, तो अभी इंस्टीट्यूट क्या मार्क्स दे रही है, लेट्स चेक इट बाद में, बट मैंने आपको गलती सुधार के दे दिया. एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो. तो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बेटा ये क्वेश्चन को आपको कितने मिनट लगने चाहिए थे? मैक्सिमम 18 मिनट. कितने मिनट्स लगने चाहिए थे? मैक्सिमम 18 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलिए. सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट. 10 मार्क का एक क्वेश्चन हो चुका है. अभी हम लोग करेंगे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3B मॉक टेस्ट में जो आया था. XYZ are sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They decided to dissolve the firm. तो ये सॉल्व कैसे करना है बेटा? देखिए, डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम है. तो रियलाइजेशन अकाउंट यू आर गोइंग टू ओपन कैश एंड बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड कर लेना शांति से. तो मैं टिकटिकी जी को चालू करता हूं. वी हैव 18 मिनट्स. हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 18 मिनट है पूरे. आप भी मेरे साथ रफ पेजेस पे सॉल्व कीजिए इफ यू वांट. इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू कैन सॉल्व इट ऑन द रफ पेजेस. देखते हैं. 3:2:1 रेशियो है. कैपिटल अकाउंट है. जनरल रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. मैं साइड में लिख दूंगा. नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स इज लैंड एंड बिल्डिंग दी है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. ओके. वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख एट 96,000. तो क्रेडिटर्स आपके 96,000 से माइनस होंगे एंड फर्नीचर आपका 1 लाख से माइनस होगा. देन क्रेडिटर्स के ऊपर रिमेनिंग इस पे 5% डिस्काउंट देना है 4 लाख के ऊपर और पेमेंट करना है. आउट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल 36,000 वेयर बैड. तो मैं इधर 36,000 माइनस कर दूंगा. बाकी का बैड फुली रियलाइज्ड. लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक्सपेंसेस है एंड आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स विच हैड बीन प्रीपेड फॉर 14,000. तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है जो हमने 14,000 में पे किया. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. चलो प्रिपेयर करते हैं. 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है. चलिए. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर realization account in exam. Particulars rupees and particulars rupees. एक 10 to 20 15 लाइंस का अकाउंट बना लीजिए. ज्यादा बड़ा मत बनाओ. 10 15 12 लाइंस का बनाओ. 10 to 12 15 लाइंस का बना लो हाफ पेज. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट. कैश एंड बैंक अकाउंट. And third one is you will prepare capital accounts. Capital account 10 lines. Particular XYZ. Particulars X, Y and Z. चलो ड्रॉ कर लेना एग्जाम में तुरंत. यस, आपको मैं एग्जाम स्पीड से ही बता रहा हूं ये पेपर कैसे सॉल्व करना था. इससे ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता सकता आपको.
बेटा एग्जाम में ब्लैक पेन इज मैंडेटरी, भले मैं ब्लू पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, पर एग्जाम में यू हैव टू यूज ओनली स्केल यूज करो, एंड यू कैन यूज पेंसिल फॉर लाइंस. You cannot use other pen. बेटा प्रॉब्लम एक बार समझ गया तो फिर वेरी इजीली यू कैन डू इट. सबसे पहला क्या है, राइट डाउन ओपनिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. What is the opening balances? 14, 20, 880 and 5 lakhs. 14 lakh 20,000, 8 lakh 80,000 and 5 lakhs. Then we have reserves, no, bank and cash and bank balance also. Two balance brought down, there is 1 lakh 76, 800. बेटा आई विल गो थोड़ा सा स्लोली, पर एग्जाम में मेरा स्पीड ज्यादा रहेगा. मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा स्पीड. 3 lakhs, 2 lakhs एंड 1 lakh. कॉमर्स देने की प्रैक्टिस करो. सो रिजर्व्स आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. नाउ कैपिटल अकाउंट इज कंप्लीटेड. देन वी विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट में 2 assets आई विल ट्रांसफर. आउटर कॉलम में आई विल टेक assets, लैंड एंड बिल्डिंग, next machinery, then furniture, inventory and debtors. 19 lakh 40,000, 7 lakh 52,000, 4 lakh 20,000, 2 lakh 23 200 and 6 lakhs 24,000. 1940, 752, 420, 223 200, 624. Then I will transfer liabilities. Liabilities में employees PF and trade creditors. So PF is 240 and 496. Now adjustments which have two effects. Unrecorded investments sold for 1,20,000. So by cash or by bank. Inner column, investment, and I will take directly a figure after total 1,20,000. Second effect I will do it afterwards. One of the creditors agreed to take some of the furniture. इसको मैं पेंडिंग छोड़ता हूं. आउट ऑफ द ट्रेड डेटर्स 36,000 प्रूव बैड. तो डेटर्स का मुझे मिलेगा 36,000 बैड. सो 624 माइनस 36, तो 5,88,000. देन लैंड एंड बिल्डिंग at 21 lakh. Machinery 6 lakh 80,000. Remaining furniture taken over by X पेंडिंग रखता हूं, तो क्योंकि क्रेडिटर्स ने ऑलरेडी फर्नीचर लिया हुआ है. लेट्स सी. एंड स्टॉक का 2,40,000. सो बैंक में मुझे कितना जमा हुआ पैसा, एसेट्स का 128 प्लस 588 प्लस 2100 प्लस 680 प्लस 240, 37,28,000. हाँ, अभी वो क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं. क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ दी फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू ऑफ 1 lakh एट 96,000. तो इसका कोई भी क्वेश्चन में ये नहीं होगा. एंड रेस्ट क्रेडिटर्स वेर पेड एट
5% डिस्काउंट, तो टू बैंक क्रेडिटर्स, अभी देखो क्रेडिटर्स कितने कम हुए हमारे, फोर एक्सचेंज वाला कुछ नहीं करते बेटा, 496 माइनस 96 इंटू 5% माइनस करके 3,80,000, तो क्रेडिटर्स आपके 5% डिस्काउंट, मतलब इनर कॉलम में आई विल राइट 3,80,000, करेक्ट। सेकंड इफेक्ट ये तो हो गया क्रेडिटर्स का। फर्नीचर टेकन ओवर बाय एक्स, तो ये कौन ले रहा है, तो आई विल राइट हियर बाय एक्स, हाउ मच, बाय एक्स अच्छा 120 ही लिखा है मैंने इन्वेस्टमेंट, अच्छा गलती से 128 बोला होगा, सॉरी। तो एक्स ने कितने में लिया, 3 lakhs में, एक्स ने 3 lakhs में लिखा बेटा, ये एक्स हैज टेकन ओवर द एसेट एट 3 lakhs, तो एक्स का ये रह गया, एंड सेकंड इफेक्ट एक्स अकाउंट के डेबिट में देंगे, एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा 78,400, 74,800, सॉरी 74,800, एंड रिपेयर्स का बिल वी हैव टू पे, रिपेयर्स कितना पैसा देना है, 14,000, और सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मैंडेटरी पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय पीएफ मैंडेटरी पे करना पड़ेगा 2,40,000, यस मैंडेटरी पेमेंट है, ये याद रखो प्रोविडेंट फंड का। सो टू बैंक में 7,08,800, 240, 37,28,000, तो कैश एंड बैंक बैलेंस में टू रियलाइजेशन एसेट्स, बेटा ये स्पीड से किया तो आप एग्जाम दे पाओगे, और ये स्पीड नहीं मेंटेन किया तो बेटा 2 बार सोच लेना कि हमारा एग्जाम हम लोग दे पाएंगे क्या नहीं। एंड लाइबिलिटीज 7,08,800 के पे किए, ओके। नाउ आई विल यूज शॉर्टकट बेटा, चलो मेरा पूरा प्रॉब्लम में बैंक का इफेक्ट तो हो गया, एक्स के डेबिट में 3 lakhs लिख लेता हूं, एक्स के डेबिट में टू रियलाइजेशन, सेकंड लाइन फर्नीचर टेकन ओवर, 3 lakhs, सेकंड इफेक्ट सबके हो गए। नाउ आई विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, देखिए प्रॉफिट है क्या लॉस है, 240 प्लस 496 प्लस 3728 प्लस 300, नो वन इज इंसॉल्वेंट, तो इधर 47,64,000 क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में 1940 प्लस 752 प्लस 420 प्लस 223.2 प्लस 624 प्लस 708.8, 4668, अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज ऑफ 96,000, टू प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सभी पार्टनर में, 96,000 कितना आया था 4764, आप अलग अलग इधर भी लिख सकते हो, अभी मेरे पास जगह नहीं है, सो टू प्रॉफिट एक्स वाई जेड ये लिख के पार्टनर्स को इधर क्रेडिट कर देंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर 96,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 48,000 32,000 एंड 16,000, over. Now I will close this partners capital account by writing to bank,
1420 plus 300 plus 48, 17,68,000. 14,68,000. 880, 200, 32, 11,12,000. 11,12,000 और ये ओरली कर लूंगा 6,16,000 एंड 6,16,000 एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैपिटल अकाउंट्स XYZ 1468, 11,12,000, 6,16,000 and check whether your bank account is tallying or not. 176 point 3728, 39,04,800. बेटा एग्जाम में कड़क मार्क्स मिलने चाहिए। मैं तो आपको पहले ही बोल दिया था कि हम लोग ये करेंगे। 39,04,800 टैलीड। देखो 18 मिनट का टाइम था, 15 मिनट में निपटा डाला। 18 मिनट का टाइम था, 15 मिनट में निपटा डाला। ये होता है एग्जाम स्पीड, ये होता है एग्जाम प्रेशर, ये होता है एग्जाम राइटिंग। राइटिंग इज नॉट वेरी खास नहीं है मेरा, तो आप लोगों को वो थोड़ा सा समझ के लेना पड़ेगा। बट यस डेफिनेटली कि जो भी आप कर रहे हो वो आपको ध्यान में आना चाहिए कि कितने टाइम में होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गलत होने की संभावना है। और कॉन्सेप्ट्स के लिए बेटा अभी ये टाइम नहीं है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं। हालांकि ये क्वेश्चन मॉड्यूल का ही क्वेश्चन था, तो बहुत ज्यादा देख सकते हो आप लोग कि बहुत ज्यादा इसको टाइम भी नहीं लगता है और इंस्टीट्यूट घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछने वाली है। आपकी सिली मिस्टेक्स लाइन बाय लाइन ना जाना, ये डिफिकल्टी हो जाती है कि आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। और जो बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा ना, उसकी तो बेटा खत्म ही है पूरा का पूरा। क्या बात है बासुती, क्या बात है, टैली कर दिया बासुती ने। यस सर, देखो ये खुशी जो मिलती है ना कि ये एग्जाम के टाइम पे जब बाहर आओगे ना तो अलग ही लेवल पे आप लोग ये कंटिन्यूएशन में करोगे। ये ध्यान में रखना। हो गया 15 मिनट में छा गए बेटा आप लोग। पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपने कंप्लीट कर दिया 15 मिनट में। चलो अभी ले लेता हूं 4 नंबर का क्वेश्चन। उसमें देखो दो क्वेश्चंस है, एक ट्रेडिंग पी एंड एल भी बनाना है और एक बैलेंस शीट भी बनानी है। हालांकि क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं था, पर हो सकता है कि ये बच्चा ये टाइम लेने वाला प्रॉब्लम है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, करेक्ट है। तो मेरा सजेशन होगा कि फिफ्थ नंबर को, फोर्थ नंबर को लास्ट में सॉल्व करो, लास्ट में सॉल्व करो। ओके, अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको डेप्रिसिएशन। 10 मार्क का एकदम खटाखट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि कोई इसको, यस नहीं बेटा मेरा आंसर करेक्ट है। आप लोग बाद में वापस से टाइम लगा के देख लेना ये क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा कि बाद में आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके हाँ जी, चलो देखते हैं आपकी डिप्रिसिएशन की तैयारी कितनी थी। आपने जिन्होंने भी मॉक टेस्ट दिया है तो उनके लिए ये समझ में आया होगा कि आप लोगों ने प्रिपरेशंस कैसे करने चाहिए। और हर टॉपिक में बेटा मैराथन बैच में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डोंट वरी, मैराथन बैच हम लोग बहुत अच्छे से करवाएंगे। यस यस बेटा, ये रिकॉर्डेड अवेलेबल ही रहने वाला है, सो डोंट वरी, ये रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा आपको। आप कभी भी बाद में भी देख सकते हो ये लेक्चर। जसदीप कौर बेटा क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा। मैराथन बैच के पहले
ये सब प्रिपरेशन है मॉक टेस्ट की। अभी एक सेकंड मॉक टेस्ट भी आएगी, शायद से 28 तारीख को आने वाली है, तो अच्छे से वो भी प्रिपेयर करना बेटा। ये एग्जाम दे के जाना, उसका हम लोग एक शेड्यूल रखेंगे बाद में, वापस से पूरा पेपर होने के बाद वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर 2 कैसे आया था वो भी, मतलब आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। 10 मार्क का दूसरा क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट। देखते हैं, टाइम शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 एक मशीनरी जो 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे हो रही थी, 29,16,000 उसकी वैल्यू है इन मशीनरी अकाउंट, ओके। 1 अक्टूबर 2024 को एक पार्ट जो हमने खरीदा था 2,40,000 में, वो सोल्ड किया है 1,35,000 में, ठीक है। अपने को पता नहीं, ये पार्ट 2,40,000 का हमने परचेस किया था 1 अप्रैल 2022 में, ठीक है। और उसी दिन एक नई मशीनरी 4,50,000 की 1 अक्टूबर को खरीदी की, और उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस ये तो ऐड हो जाएगा, तो मेरी एसेट की वैल्यू 450 प्लस 24 4,74,000 होने वाली है। कंपनी मेथड भी चेंज कर रही है 1 अप्रैल 2024 से। शो मशीनरी अकाउंट, कोई बात नहीं बेटा, एकदम सिंपल है। देखते हैं कैसे बनाना है, चलिए बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट, देखो मशीनरी अकाउंट है, इसमें आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस कॉलम, एंड रुपीस कॉलम। तो शायद से आज ही एग्जाम थी। डेट नहीं बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये अलग था, ये इजी नहीं था। 1 अक्टूबर 24 बेटा, सुमित तेरे प्रिपरेशन अच्छे हुए इसलिए तू ऐसा बोल रहा है, सॉरी। 1 अप्रैल 24 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा हुआ है 29,16,000, ओके। एंड 1 अक्टूबर को कुछ नहीं आया, तो बेटा हमने एक नया मशीन भी खरीदा, टू बैंक 450, इधर लिख देने का 4,50,000 प्लस 24,000, ताकि इंस्टीट्यूट को भी समझ में आए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 लाख, क्या बात है, 74,000। 5 मई को सेकंड मॉक टेस्ट है, सॉरी 5 मई को है सेकंड मॉक टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर को बाय डिप्रिसिएशन जो भी पार्ट आपने बेचा, उसका 6 मंथ्स का ऑन एसेट सोल्ड, और उसको हमने बेचा कितने में, बाय बैंक। हमने बेचा है 2,40,000 का माल 1,35,000 में, तो ये बाय बैंक लिख के छोड़ दिया। और डिप्रिसिएशन ये देखो, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, कुछ नहीं आया तो इतना रिकॉर्ड ही कर लेना, 2 मार्क तो मिल ही जाएंगे। अभी इसके बाद बेटा वर्किंग नोट 1 एक 6 लाइन के बाद बना लो। वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। देखिए मैं इसके कॉलम्स बनाता हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, मशीन 1। अभी मशीन 1 में बेटा 2 पार्ट आएंगे, एक सोल्ड और एक रिटेन। मशीन 2 ये तो नया ही खरीदूंगा, एंड टोटल। तो ये अपने लिए आसानी रहेगी, कॉलम्स बना लीजिए इस तरीके से, एक एटलीस्ट 3/4 पेज का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, और ये प्रैक्टिस मैंने पूरा लिया हुआ है, वैसे तो ये आना ही चाहिए आपको, और नहीं आ रहा है तो बेटा वापस से बैचेस अटेंड करो, डोंट वरी, डोंट गेट पैनिक। 1 अप्रैल 2024 के पहले, सॉरी, एक मशीन हमने लिया था 2022 में, पार्ट परचेस किया था उसका 2,40,000 का। देखते हैं, तो कॉस्ट, हमें इसकी एक कॉस्ट पता है, जो हमने सोल्ड किया था वो एसेट 2,40,000 का था। कितने का एसेट था, 2,40,000। अभी इसका डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से हुआ था बेटा, 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब 24,000 का इसका बैलेंस था, तो इसका
WDV 1 अप्रैल 2023 को 240 माइनस 24 मतलब 2,16,000 बराबर है। लेस अभी इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगा पूरे साल का 21,600। तो इसका WDV 1,424 को -21.6 करके 194,400 आया। आया समझ में? हाँ सर। और इसी साल हमारा टोटल एसेट कितना था? टोटल एसेट था हमारा 29,16,000 1 अप्रैल 2024। बेटा ये स्पीड मैच करना पड़ेगा आपको। 29,16,000 ये हमारी एसेट की वैल्यू थी। तो 2916 माइनस 194.4, तो मेरा एसेट का वैल्यू कितना आया रिटेन? 27,21,600। 27,21,600। ठीक है, 27,21,600 ये हमारी एसेट की वैल्यू आई थी। अभी आपको इसमें 1 अक्टूबर को आपने नया मशीन खरीदा एडिशंस, और ये मशीन 2 हमने खरीदा 4,74,000। अभी इधर इसके ऊपर का डिप्रिसिएशन ये 6 मंथ्स का आएगा, इसका 12 मंथ्स का आएगा, और इसका वापस 6 मंथ्स का आएगा। ध्यान में रखिए। तो 194,400 इंटू 10%, नहीं 6 मंथ्स मतलब इंटू 5%, सॉरी। तो ये 5% है, डिवाइड बाय 2 कीजिए। 9720 ये इसकी वैल्यू थी, 9720। इसका सेम रेट है 2,72,160, और इसका 5% आएगा 6 मंथ्स मतलब 4,74,000। मेथड बदल दी है। मेथड बदलने से कोई इंपैक्ट ही नहीं गिरा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आगे सेम रेट से कंटिन्यू हुआ है। तो जो अपने डेप्रिसिएशन एसेट सोल्ड के ऊपर था, अभी ये हम लोग दिखेंगे नहीं। WDV 1 अप्रैल 2025, इसके WDV इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट ये सोल्ड किया गया है, और ये दोनों एसेट हमारी रिटेन है, रिटेन है। तो 194,400 की एसेट, बेटा ये बहुत सा कैलकुलेशन बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। आप मेरा रेगुलर लेक्चर देख लीजिए, यू विल फाइंड इट वेरी सिंपल। ये WDV है, और सोल्ड कितने में किया? तो सोल्ड किया है आपने 1,35,000 में। तो यहां पे यू आर इन लॉस ऑफ 49,680, और रिटेन किया है जो एसेट, उसके ऊपर 10% के हिसाब से आपका एसेट का टोटल 24,49,440 आएगा। और 4,74,000 में से 5% आपने माइनस किया, तो 4,50,300 प्लस 24,49,440। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है माइनस करके आपका ये बैलेंस आएगा। 4,74,000 की आपकी एसेट होगी। एसेट सोल्ड 272,160 प्लस 23,700, ये आपका डेप्रिसिएशन आएगा 295,860 ओनली ऑन रिटेन एसेट। रिटेन एसेट के ऊपर कहीं देखेंगे, और ये जो है ना ये भी सिर्फ रिटेन एसेट देखेंगे, हालांकि ये दोनों अलग अलग थे। अभी हम लोग सोल्ड एसेट का कंप्लीट ही कर देंगे बेटा। सोल्ड एसेट को निपटा देते हैं बाय बैंक 1,35,000, उसके ऊपर का डिप्रिसिएशन 9,720, जो एसेट सोल्ड का डिप्रिसिएशन है 9,720, और लॉस मेरा हुआ है बाय लॉस ऑन सेल। देखो बेटा ये तरीके से आपको सॉल्व करना था। लॉस ऑन सेल 49,680, और बाय डिप्रिसिएशन जो रिटेन एसेट पे हुआ, आधे बच्चे शहीद हो जाएंगे इसमें। रिटेन एसेट पे जो ये यही जिनकी एक्चुअल एग्जाम देने की औकात है वही लोग ये कर पाएंगे। 295,860, 295 जिन्होंने टाइम पास किया है, बहुत मजे किए हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन उनको नहीं समझेगा। एंड 28,99,740,
बेटा 10-18 मिनट का प्रॉब्लम था, पर आप देख सकते हो हमने उसको खत्म कर दिया। 33,90,000। टैली हो चुका है। 38,39,90,000। यदि मैं वर्किंग नोट से जाऊंगा तो एग्जैक्टली 10.5 मिनट में सॉल्व किया। यही मैं बताना चाहता हूं, जिनके प्रिपरेशन अच्छे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्पीड जिन्होंने भी फॉलो किया था, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की थी, जिनको भी भले दूसरे फैकल्टी के साथ किया रहेगा अपने पढ़ाई, पर यदि आप ये स्पीड से मैच नहीं कर रहे हो तो बेटा किधर तो लैकिंग कर रहे हो, किधर तो लैकिंग कर रहे हो, ये ध्यान में रखना। और ये आपकी वर्किंग नोट थी, और ये वर्किंग नोट से पूरा टेबल ये याद हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ने 3 वर्किंग नोट्स किए हैं, पर मैंने आपका टाइम बचा लिया मुन्ना, बहुत बचा लिया। यहां पे मैंने पूरा का पूरा एक ही वर्किंग नोट में निपटा दिया। वेरी गुड बेटा मोहम्मद गुलफान। आशा करता हूं 10.5 मिनट में, मतलब आपका पेपर, मुझे तो लगता है ये स्पीड से गए तो आधा घंटा पहले ही आराम करना शुरू कर दोगे आप लोग। 2 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए। ऑलमोस्ट 1 घंटे का पेपर हो चुका है, और आपका अभी तक जो सॉल्व हुआ है, ये 10 मार्क का ये क्वेश्चन और 20 मार्क मतलब 30 मार्क का पेपर आपने ऑलमोस्ट डन कर लिया है। ओके, अभी मैं पूछूंगा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। बीआरएस है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में, हर एक के अपने अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं बीआरएस के, तो मेरी मेथड थोड़ी अलग है। एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत इजी मेथड है, जो पहली बार ही मेरे से कर रहे हैं। ये 10 मार्क भी आपके खुद के रहेंगे, ये ध्यान में रखो। ये 10 मार्क में से कितने मिनट में मेरा कैलकुलेशन होता है, उसमें 4 मिनट ऐड कर देना एडलिस्ट करने का। 18 मिनट है आपके पास। 4 मिनट आप लोग एक बार पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको 4 से 4.5 मिनट फेयर करने को लगेंगे। बाकी आप रफ पेज पे ये पूरा कैलकुलेशन करवा दोगे। और ये कैसे करने वाले हो ये ध्यान में रखो। ये लीजिए, ऑन 30 सितंबर 2024 द बैंक अकाउंट ऑफ समीर अकॉर्डिंग टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन। ओके, तो ये ओडी का प्रॉब्लम है, मैं यहां पे एक्सेप्शनल प्रॉब्लम लिख दूंगा। नेक्स्ट, ऑन द सेम डे बैंक स्टेटमेंट अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये तो अपना डेबिट बैलेंस ही है अपने बुक में, ये तो एसेट ही है, तो ओडी निगेटिव आएगा ऐसा लग रहा है। अ चेक डिपॉजिटेड was credited only on 3 अक्टूबर। इंस्टीट्यूट ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया। सीबी टू पीबी जाना चाहते हो, पीबी को बॉक्स कर दो, सीबी पीबी यहां पे लिख दो। सीबी टू पीबी मतलब पीबी में चेंजेस नहीं करने आपको। चेक डिपॉजिट किया 1,05,120 रुपए का, तो क्लियर नहीं हुआ है पासबुक में, देख लीजिए। तो जीरो पासबुक में है, तो आंसर आपका माइनस यहां पे, और ओडी का प्रॉब्लम होगा तो फाइनल आंसर ऐड होगा। हाँ बेटा, अ पेमेंट बाय चेक 1280 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो कैश बुक में आपने 1280 मतलब 2 बार रिकॉर्ड किया, तो कैश बुक में आपने 2560 पेमेंट बताया एंड 1280 ही था, तो अभी आपको 1280 ऐड करना पड़ेगा, और फाइनल आंसर में लेस 1280। नेक्स्ट, on 29 September, the bank credited 93,920 received from a customer Samir, but the advice of the ये मिला नहीं है। बैंक ने हमारे अकाउंट में कितना 93,920 डिपॉजिट तो कर दिया, पर अकाउंट में जीरो। इसको बॉक्स करूंगा तो प्लस, एंड फाइनल आंसर माइनस 93,920।
बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, बैंक चार्जेस की वजह से कैश बुक में 0, तो बैंक चार्जेस पेमेंट साइड पे 4640, क्या बात है, यहाँ पे माइनस, तो एंड में होगा ऐड 4640। 6 सितंबर को 16 लाख रुपया बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया गलती से, तो बैंक ने क्रेडिट कर दिया तो कैश बुक में अंडा एंड कैश पासबुक में 16 लाख, यहां पे प्लस कर देंगे और फाइनल आंसर -16 लाख आने वाला है, -16 लाख। A bill of exchange 11,20,000 was discounted with the bank. This bill was dishonor, but no entry has been passed in the books of Samir. तो बेटा पासबुक में उसके अकाउंट में 0 बैलेंस आया और बिल ऑफ एक्सचेंज 11,20,000 उसने डिस्काउंट किया था, तो अभी 11,20,000 उसके अकाउंट में आ चुका था, तो 11,20,000 ये पैसा आने के बाद आ चुका था तो वो उसको देना था। अब ये उसने क्या किया, 11,20,000 का चेक उसका जो था वो डिसऑनर हुआ, जिसकी माहिती इंफॉर्मेशन उनके पास ना ही, तो इसीलिए हम लोग उसको बॉक्स कर देंगे और इसमें एंट्री हुआ ही नहीं, तो फाइनल आंसर ऐड हो जाएगा, फाइनल आंसर ऐड हो जाएगा 11,20,000। एंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बहुत ही सिंपल है, -1,06,000 080 और यहाँ पे हुआ 0 अंडा, ये प्लस करेंगे और फाइनल आंसर में माइनस होगा। चेक करते हैं, 32,496 लीजिए, पहला आंसर ऐड 1,05,120, दूसरा आंसर -1280, तीसरा आंसर भी -93,920 प्लस 4640 -1,60,000 16 लाख सॉरी, प्लस 11,20,000 एंड माइनस 1,06,080। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। $32,496 एड में 1,05,120 -1280 -93,920 प्लस 4640 -16 लाख प्लस 11,20,000 -1,06,080 5,39,024। यस करेक्ट है, 5,39,024। 5 मिनट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एडलेस क्या था क्या नहीं था। जो बच्चों को नहीं समझ में आया बेटा वो वापस से ये चैप्टर कर लेना, तो आपका आंसर फाइनली बराबर आ जाएगा। आशा करता हूं ये आंसर भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो इसको कंटिन्यूएशन में करो और ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, और 10 मार्क हाथ के थे और 5 मार्क आपको लिखने में जाएंगे 5 मिनट, तो 10 मिनट में ये भी सॉल्व हो जाएगा। जिसका टाइम था 8 मिनट आपने यहाँ पे भी बचा लिए, 8 मिनट आपने यहाँ पे भी बचा लिए, तो ये आपका पेपर हुआ 10 और 10 20, 20 और 30, 30 और 40 मार्क कंफर्म श्योर शॉट आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन जो था वो देखो, मॉक टेस्ट है, मुझे पता है कि मैंने सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने चाहिए, पर मैं एग्जाम पैटर्न के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। यदि टाइम परमिट्स, पहले मैं देखता हूं कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। देखो अभी तक 40 मार्क के हिसाब से मुझे ये पेपर 1 घंटा और 20 मिनट, मतलब 40 मार्क का पेपर मेरा 1 hour 20 minutes, मतलब 100 मिनट यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। उतने मिनट में मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। कितने मिनट में? अभी तक का पेपर मेरा 40 मार्क का पेपर, वैसे देखने गए तो 40 इंटू 18, मतलब मेरे पास 1.8 इंटू 40, मतलब 72 मिनट्स में होना चाहिए, पर मेरा 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा में ले रहा हूं, तो 80 मिनट में मैंने 80 मिनट में ये सॉल्व कर दिया है।
हालांकि अभी आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन होने के बाद मैं एग्जाम में आपके जगह पे होता तो मैंने क्वेश्चन 1 जो मैंडेटरी है उसको सॉल्व करने की शुरुआत की रहती। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ कैपिटल रिसीट, ट्रू और फॉल्स? तो मैं यहां पे लिखूंगा इसका आंसर यस, इंश्योरेंस रिसीव्ड इज कैपिटल रिसीट में आएगा बिकॉज इट इज नॉट द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यदि मैंने ये नहीं लिखा नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो मुझे नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये, तो मेरा 1 मार्क यहां पे चला जाएगा। वेरी गुड बेटा। सुमित बोल रहा है कि सर आपने क्लास में इतना डिटेल में करवाया कि आपको बहुत इजी जा रहा है। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी P&L में जाएगा, फॉल्स। ये मशीनरी अकाउंट को डेबिट होगा, ये मशीनरी अकाउंट को डेबिट होगा क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज रिलेवेंस एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ट्रू। तो यहां पे मस्ट डिस्क्लोज रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन है, वही सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर देना, इसका कोई अलग से रीजन लिखने की जरूरत नहीं, ट्रू है तो। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, नो बेटा ये तो लॉ का क्वेश्चन वाई हुआ। एक्टिंग फॉर वन मतलब एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम भी चलेगा, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डेबिट नोट इज इशूड इन केस ऑफ CS, ये मैंने बताया था। क्रेडिट नोट इन CL's रिटर्न बुक एंड DP डेबिट नोट इन परचेस रिटर्न नोट, तो ये मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया था। तो डेबिट नोट ये परचेस रिटर्न बुक के लिए इशू होता है, सेल्स रिटर्न के लिए ये ना ही इशू होता। When shares are forfeited, shares amount will be called up, अमाउंट से होगा ओके, ऑफ शेयर्स forfeited and shares forfeiture account credited with calls in arrears, no, shares forfeiture में अमाउंट कलेक्टेड जाता है एंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप लोग ओपन करते हो फॉर क्रेडिट बैलेंस। डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट तो ठीक था, बट क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव्ड था। शेयर्स फॉरफिटेड की अमाउंट ये रिसीव्ड अमाउंट आएगी, ना कि कॉल्स इन एरियर्स। देखो सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या है, तो सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आपको लिखना है कि बेटा ध्यान में रखो, सर्विस में एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिट्स करना, टैक्स करना, फाइनेंस में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस और फाइनेंशियल एडवाइस भी दे सकते हैं। बहुत सारे उसमें पॉइंट्स है, यहाँ पे 4 मार्क के लिए एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो भी लिख के लेना। यस, एटलीस्ट हाफ पेज का आंसर हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज मेथड, ये आप लोगों को ये 4.5 का प्रॉब्लम है, तो 8 मिनट मैक्सिमम आपके पास रहेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है, ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 12 और 4 16 और 4 20, तो आपके इसमें ये पूरा क्वेश्चन 20 मार्क का कंप्लीट करने के लिए आपको मैक्सिमम 30 मिनट लग सकते हैं। वैसे तो कितना मिनट लगना चाहिए, 20 इंटू 1.8 36 मिनट लगना चाहिए, पर आपको यहाँ पे कवर कर लेना है 36 मिनट्स के बदले में 30 मिनट्स में ये पूरा कवर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों क्वेश्चंस लगातार बहुत अच्छी तरीके से आपने सॉल्व कर दिया, 1 2 3 एंड 3 क्वेश्चंस। तो यहां पे आपके 60 मार्क का पेपर कंप्लीट हो चुका है, यहां पे आपका 60 मार्क का पेपर कंप्लीट हो चुका है। बेटा आप लोग ही मुझे बताइए कि अभी तक के पेपर में आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों ने जो भी सॉल्व किया वो सब आया था, या आपको प्रिपरेशन की जरूरत है? सर हमें और प्रिपेयर करना पड़ेगा तब जाके हम लोग कर पाएंगे। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसको बोलूंगा ये मत करियो, और आप लोग चले जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं 4 डिस्कस तो करने वाला हूं, पर फिलहाल मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा हूं। तो टाइम मैनेजमेंट में बेटा थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि कैसे करना है, क्या करना है। यस, सो यहाँ पे
बेटा एग्जाम में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, पर ठीक है। अभी क्वेश्चन 5A, हम लोग शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ब्रेक। थोड़ा सा आवाज मेरा अभी, बहुत सुबह से मैं 7 से सेशन ले रहा हूं, तो आप भी ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट के ब्रेक के बाद 12:50 को वी आर गोइंग टू, सॉरी 2:50 को वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। टाइमर यहाँ पे चालू रहेगा। आप यदि ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लीजिए। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।
चलिए, सो लेट्स स्टार्ट वन मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आशा करता हूं अभी तक का पूरा समझ में आया ही होगा आप लोगों को कि कोई गड़बड़ नहीं है इसमें अभी। आ गए बच्चों? यस। चलो, अच्छी बात है। मेसर्स विभा गारमेंट्स wires were unable to agree the trial balance as on 31st March 2025. अरे वाह सुमित, आपने वो भी सुन लिया। इंटरमीडिएट में मैंने जो मोटिवेशन दिया था। ओके। चलिए ठीक है। एडिशंस टू मशीनरी वेयर मेड। आ जाइए 5 नंबर के क्वेश्चन में। एक रिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम अपने को लेना है, एक इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रॉब्लम अपने को लेना है। अच्छा, रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अभी बेटा ये नेक्स्ट ईयर में एरर फॉलो करना है। नेक्स्ट ईयर में आप लोग क्या ओपन करते हो, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट बहुत प्रैक्टिस किया है इसका। तो अपने डेबिट दे दिया रिपेयर्स को, हालांकि डेबिट देना चाहिए था मशीनरी अकाउंट को। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, ये इसकी एंट्री होगी। तो पहला एंट्री आपका बहुत ईजी है, मशीनरी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। दूसरा, द एडिशन ऑफ फ्रेट कॉलम इन परचेज जर्नल वाज एक्सेस बाय 13500। फ्रेट कॉलम में एक्सेस है तो बेटा फ्रेट कॉलम का अकाउंट में जाता है, फ्रेट अकाउंट में, और फ्रेट अकाउंट को हमने एक्सेस बताया। एक्सेस बताया तो क्रेडिट करना है फ्रेट को, और सस्पेंस को डेबिट देना है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट, बट फ्रेट नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, ये एंट्री इसका होगा। सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। 3 नंबर, गुड स्टॉक वैल्यू ₹9450 रिटर्न टू रे एंड कंपनी। अरे बाप रे, नाम भी नहीं बदले इसके। हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ रे एंड कंपनी टू परचेस रिटर्न। चलिए, तो गुड्स टू दी रिटर्न टू रे एंड कंपनी मतलब क्या? यस। तो ये, सॉरी है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म तो रे अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। ओके, सॉरी, ओके, रे एंड कंपनी को हमने डेबिट देना चाहिए था। तो हमने क्या किया, रिटर्न टू परचेसेस किया था। ओके, हाँ, तो परचेस रिटर्न है। तो परचेस रिटर्न मतलब टू परचेस रिटर्न, एंड रे एंड कंपनी को डेबिट देना चाहिए था। परचेस रिटर्न को क्रेडिट किया, टू रे एंड कंपनी को भी क्रेडिट किया, एंड सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दिया। तो अभी एंट्री क्या होगा, रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस बाय डबल अमाउंट 18900। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर दिया है, रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए था। रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, sundry items of furniture sold 2,70,000, 2,70,000 had been entered in the sales book। तो आपको एंट्री करना चाहिए था पी एंड एल
सेल्स को कैंसिल करके फर्नीचर को क्रेडिट, तो यहां पे एंट्री होगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. And next one, bill of exchange received from Mayur and Company had been written by the bank as dishonor and credited to bank and debited to bills receivable account. Okay. अभी डिसऑनर की एंट्री होनी चाहिए थी, ड्रॉई को डेबिट होना चाहिए था, मतलब मयूर एंड कंपनी को, पर हमने गलती से डेबिट दे दिया मयूर एंड कंपनी को नहीं देते हुए बिल्स रिसीवेबल को, तो एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करना एंड मयूर एंड कंपनी डेबिट देना, तो मयूर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा ये भी एंट्री एक में, एक ही मिनट में, तीसरा एंट्री भी रॉन्ग है. एक मिनट. थर्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री इज ऑल्सो रॉन्ग. इट शुड बी रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. नेक्स्ट. 5 मार्क तो मिल गए इसके. फॉलोइंग इज द रिसीट पेमेंट अकाउंट. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मुझे बहुत सही लगा, और 5 मार्क के लिए यहां पे आपके नॉलेज को टेस्ट किया गया है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो यस, ठीक है बेटा, अभी तक का कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ गया अभी तक का तो. यस, बासवती इजी बेटा. चलिए अभी बढ़ते आगे. हो गया हार्डली 20 15 20 मिनट का सेशन है बेटा अभी. ये क्वेश्चन हो गया तो, और मैं इसकी प्रैक्टिस जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये करने की जरूरत नहीं है. फिर मैं आपको एग्जाम में पेपर कितना सॉल्व करना है, तो जितना मैंने सॉल्व किया होता वही डिस्कस करेंगे. ठीक है. देखो कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो पूछा ही नहीं है. सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो सब्सक्रिप्शन हम लोग स्टार मार्क लगाएंगे. डोनेशन 6750 वी विल ट्रीट इट एज रेवेन्यू रिसीट. इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये आईएनडी के क्रेडिट साइड में जाएगा. इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी नहीं है मुन्ना, तो ये भी आईएनडी के क्रेडिट साइड में जाएगा. एंड फैशन शो का प्रोसीड्स और फैशन शो के एक्सपेंस नेट ऑफ करके 75,750 माइनस 51,000, तो आपका रिसीट ज्यादा है, तो 24,750 आईएनडी के क्रेडिट में जाएगा. पेमेंट फॉर क्रेडिटर्स, ये अकाउंट ओपन होगा. ऑनरेरियम टू, ये आईएनडी के डेबिट में जाएगा. सैलरी आईएनडी के डेबिट में जाएगा. सन्ड्री एक्सपेंस आईएनडी के डेबिट में जाएगा. ये भी आईएनडी के डेबिट में जाएगा. ये क्लोजिंग बैलेंस शीट. अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना दिखेगा देख लीजिए. सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय कैश यू विल राइट 67,500, यहां पे डेबिट तो इधर क्रेडिट. सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब रिसीवेबल, टू रिसीवेबल आपका 750 दिखेगा, और बाय रिसीवेबल आपका 3,000 दिखेगा. एंड बाय रिसीव्ड इन एडवांस ये आपका 2250 दिखेगा. एंड टू रिसीव्ड इन एडवांस
ये आपका 1500 दिखेगा। तो आईएनडी में आपका कितना जाएगा देखो, 2250। टी फॉर्मेट हमेशा अच्छे होते हैं, एडलेस से ज्यादा। 70,500 सब्सक्रिप्शन में, आईएनडी में 7500। वेरी गुड बेटा गुलफान। और यहां पे मैं कॉस्मेटिक का 2 अकाउंट्स ओपन करूंगा, कॉस्मेटिक का ट्रेडिंग अकाउंट एंड कॉस्मेटिक का क्रेडिटर्स अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,500 एंड क्रेडिटर्स का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,500। तो ये मेरा स्टॉक अकाउंट हो गया। क्रेडिटर्स को मैंने पेमेंट किया है 22,500 का, पेमेंट साइड पे दिख रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर मेरा कॉस्मेटिक का परचेसेस होगा, तो परचेसेस 22,500 प्लस 16,500 माइनस 12,000, 27,000। टू परचेसेस मेरा 27,000 होगा एंड बाय आईएनडी, जिसमें मैं कंजम्पशन करके डालूंगा आईएनडी में, 15,000 माइनस 16,500। तो 25,500 मेरा जाने वाला है कॉस्मेटिक ट्रेडिंग अकाउंट में। 25,500 जो आईएनडी के डेबिट में आएगा। तो ये 25,500 इसका, और सब्सक्रिप्शन का कितना, 70,500। और आईएनडी के क्रेडिट की डायरेक्ट टोटल ले लेता हूं, आप इंडिविजुअली लिखोगे। 6,750 प्लस 4,500, 11,250। और डेबिट में 58,500। बेटा यहाँ पे 2250 का लॉस हुआ है, आईएनडी में 2250 का लॉस हुआ है। लेट्स चेक द आंसर। डरना मत। ओ, और सॉरी ये रहेगा ना, सॉरी, और 24 ये तो रहेगा, सॉरी 24,750 लिखना रहेगा, सॉरी। तो प्रॉफिट आया 22,500। कॉस्मेटिक कंज्यूम कितना आया बेटा आपका, 12,000, 27,000, 27,000 में 15,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट गलत लिखी मैंने, 10,500 है कॉस्मेटिक की। यस बेटा, कॉस्मेटिक की टोटल गलत लिखी मैंने, 10,500। ओके, 15,000 प्लस 27 माइनस एक गलत लिखा तो बेटा पूरा आंसर गलत। 31,500 आने वाला है। कितना आने वाला है, 31,500। कॉस्मेटिक में गलती हुआ, किसी ने बताया नहीं मुझे। 31,500, चेक द आंसर। 10 मार्क इसके हो गए। $31,500 डोनेशन, इंटरेस्ट 24,750, ऑनरेरियम, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस, रेंट, और ये सरप्लस 16,500 आ रहा है। सॉरी, मैंने कॉस्मेटिक का क्लोजिंग स्टॉक गलत लिख दिया, एक आंसर गलत लिखा तो पूरा ही गलत हो गया। क्लियर बेटा, एक चीज गलत हुआ था, अभी आसानी से समझ में आ गया सबको। यस, बहुत डेंजर है अकाउंट्स का पेपर, बहुत ही डेंजर। बोनस शेयर का एक क्वेश्चन था, हालांकि मॉड्यूल में से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो आप। बोनस शेयर्स को 10 मार्क के लिए एक मैक्सिमम 15-20 मिनट लगने चाहिए थे, 15 मिनट। ज़्यादा कुछ एंट्री नहीं है, आप देख सकते हो। फाइनल कॉल को पहले ड्यू करना है,
तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने ये ऑलरेडी बहुत बार ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल ये आपका नेक्स्ट एंट्री आएगा। सो फाइनल कॉल के बाद आप लोग ये अभी फुल्ली पेड हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम के पहले सीआरआर यूज करना था। सीआरआर अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, पी एंड एल डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शोल्डर एंड बोनस टू इक्विटी शोल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते टाइम बेटा ये आपने नहीं लिखा तो यू विल नॉट गेट मार्क्स आउट ऑफ अबाउ दिस शेयर्स। और इस तरीके से आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है और ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, ये नोट भी आपको लिखना पड़ेगा। इट विल टेक मैक्सिमम 15 मिनट। आप मेरा इशू ऑफ शेयर्स का और इशू ऑफ बोनस शेयर्स का भी चैप्टर एक बार देख लेना, यू विल गेट 100% कॉन्फिडेंस। हाँ बेटा, सुमित, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस रहते हैं और ये क्वेश्चन जो है अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंसिडरेशन, ये 5 मार्क के लिए बहुत सिंपल है। नेचर ऑफ बिजनेस देखो, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर देखो, पर्पस ऑफ एक्सपेंस देखो और मटेरियलिटी इन्वॉल्व। 5 मार्क, सिर्फ ये पॉइंट्स भी लिखे तो 1-2 मार्क मिल जाएंगे। और अंदर का एटलीस्ट कुछ तो चेंज द वॉइस करके लिखना। नेचर ऑफ बिजनेस देखिए, क्योंकि फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर परचेस करना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वही अपने लिए वो एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑफन आप लोग करते रहोगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक आध बार करते रहोगे, इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया है। पर्पज ऑफ एक्सपेंस देखिए, नॉर्मल ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और बेटा आपको इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा तो कैपिटल एक्सपेंसेस। एंड मटेरियलिटी इन्वॉल्व अमाउंट भी देखिए कितना है तो ये आ जाएगा। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस ये रिटेल बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, इसके बारे में आपको दिया गया है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आपको कौन से आइटम्स के ऊपर फोकस करना रहता है, तो फीफो वेटेड एवरेज ये प्रिंसिपल आपको देखने होते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट होगा तो ये मेथड्स में आपको ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज होगा। यदि नॉट इंटरचेंजेबल है और इंटरचेंजेबल है तो फीफो वेटेड एवरेज, और बस ये 2 मेथड ही इंडिया में अलाउड है। आया समझ में? तो ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस ये रिटेल की मेथड होती है। नॉर्मली ये नॉन हिस्टोरिकल मेथड होती है जहां पे सेलिंग प्राइस में से जीपी माइनस किया जाता है, सेलिंग प्राइस में से जीपी माइनस किया जाता है। तो ये मेथड में ये एक्सप्लेन करना होगा। एंड आपको सिम वर्सेस इंटरचेंजेबल वर्सेस नॉन इंटरचेंजेबल ये मैंने सिखाया हुआ है। इंटरचेंजेबल होगा तो फीफो वेटेड एवरेज, नॉट इंटरचेंजेबल होगा तो हिस्टोरिकल सॉरी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। एंड अभी हम लोग कर रहे हैं 15 मार्क का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे मेरा पूरा पेपर, एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया बेटा बिकॉज ये ऑप्शन में था, तो मैं उतना ही करवाऊंगा जितना मैं एग्जाम एंगल से जा रहा हूं। तो मैंने सिलेक्ट किया था क्वेश्चन नंबर 6। ये कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर्स। तो इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। नहीं बेटा, ओरली बिरली कुछ नहीं, आज एग्जाम एंगल से है तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना मैंने आज मॉक टेस्ट का डिस्कशन मैंने जो बोला था। आप लोगों को आंसर्स ऑलरेडी वहां पे मिल चुके हैं। लगे तो हम लोग जब रिविजन्स करेंगे मैराथन बैच तब मैं ये डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा आगे का कमिटमेंट 4 बजे का है। 4 o'clock को मेरा नेक्स्ट क्लास है। तो आशा करता हूँ आज के सेशन ये 20 मिनट के बाद में बेटा, ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, मैक्सिमम अपने पास कितना टाइम अवेलेबल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है वैसे तो 15 × 1.8, 27 मिनट होगा, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं 20 मिनट में इसको कंटिन्यूएशन में खत्म कर दूंगा। ओके, तो 3:30 बजे मैंने बोला भी था कि हम लोग, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो देखते हैं 20 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मॉक टेस्ट के बैच का कोई फायदा हुआ आपको? मॉक टेस्ट के बैच का कुछ फायदा हुआ? आज जो भी डिस्कशन हुआ मॉक टेस्ट पेपर, ये आज का डिस्कशन था। बच्चों को पेपर कैसे लिखना है, और मैं हर बैच में ये अभी करवाने वाला हूं। 2 से 3 पेपर सर ने ही सॉल्व करके बताए,
तो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कुछ रिप्लाई नहीं आ रहे आप लोगों के। चलिए, चलिए बेटा। Amit Limited issued 50,000 equity shares of 100 each at a premium of 20%। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक वर्किंग नोट बनवा लूंगा। एग्जाम में 50,000 शेयर्स, ये मेरे लिए आसानी होगी। उसमें से 20% प्रीमियम मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम 20। मैं सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा एक, आपको सिर्फ बता देता हूँ। वर्किंग नोट देख लेंगे। देखिए, वर्किंग नोट में 20 ऑन एप्लीकेशन, 30-20 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 ऑन फर्स्ट कॉल है। तो 20-30-20 एंड लास्ट में वापस 30 बिकॉज 100 रुपीज का शेयर है। अभी ऑल शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब। 5,000 शेयर्स ये भाई साहब ने एडवांस में पे कर दिए, बहुत पैसा हो गया इनके पास। तो 50,000 शेयर्स में से पहले तो एक बंदा, मैं पहले डायग्राम बना लूंगा। एम 5,000 शेयर्स कॉल्स इन एडवांस। कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉल्स इन एडवांस, तो इन्होंने 5,000 इंटू 30 रुपया, 1,50,000 रुपया एडवांस में ही पे कर दिया। उसके बाद तो फाइनल कॉल ये, तो इसको 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा बिकॉज कॉल्स इन एडवांस पे इट इज इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होगा। तो इनको 12% से इंटरेस्ट रेट होता है। अभी ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। 4/12 तो आपको कितना इंटरेस्ट देना है कैलकुलेट कीजिए। यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन 1,50,000 इंटू 12% इंटू 4/12, 6,000 रुपीज। ठीक है, 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट ये अपना एक्सपेंडिचर होगा। फाइनल कॉल 500 शेयर्स एंड वन शेयर होल्डर हैविंग 250 शेयर्स। तो इन्होंने कॉल्स इन एरियर्स वाले 500 शेयर्स, अभी इन्होंने एरियर्स कितना पे किया? हाँ, all shares were fully subscribed. M who has having 5,000 shares, full amount on first call itself, and the final call ये 500 लोगों ने पे नहीं किया। फाइनल कॉल 30। अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट ये 30 रुपीज, ये कितने महीने के बाद पे किया, तो इनको भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ये कॉल सिनेरियोस पे इंटरेस्ट इनकम होता है। एंड 250 शेयर्स, इनके ऊपर 30 रुपीज इन्होंने 4 महीने के बाद पे किया। तो दैट 10% इज योर इनकम आफ्टर 4 मंथ्स। तो इधर 375 का मेरा इंटरेस्ट आया एंड इधर 250 इंटू 30 इंटू 4/12 इंटू 10%, ये 250 रुपीज यहां पे मेरा इनकम आया। और जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स थे वो कितने थे, जिन्होंने सब कुछ टाइम पे ही पे किया? 50,000 माइनस 5,000 माइनस 750, तो 44,250। ये तो मेरे गुड शेयर्स, ये तो मेरे गुड शेयर्स हैं।
ये ध्यान में रखिए। तो इसके ऊपर का इंटरेस्ट मेरा इनकम होगा 575। अभी बेटा ये सभी एंट्रीज हमें करनी पड़ेगी। एक ही मिनट, ये मेरा अभी लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है पूरा। मेरे एंट्रीज में कर रहा हूं अभी। देखो 20 रुपए की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 50,000 शेयर्स। तो कितना आया? 50,000 शेयर्स इंटू 20 रुपया, तो ये आपका 10 लाख रुपीज। एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। देखो पहला एंट्री, यस बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 मार्क मिल चुका है। 30 एंड 20 सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 रुपीज इंटू 50,000 शेयर्स, तो 50,000 शेयर्स इंटू 50, तो 25 लाख। ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसमें से 50,000 इंटू 30 मतलब 15 लाख जाएगा कैपिटल में और 10 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये पूरा पैसा मिल चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 25 लैक्स। यहां पे 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो चुके हैं। यहां पे 3 मार्क्स आपके कंफर्म हो चुके हैं। 20 रुपीज पूरा पैसा मांगा गया है, 10 लाख रुपया। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, पर मिला नहीं है, ये ध्यान में रखो। इक्विटी शेयर यस फर्स्ट कॉल, उसमें से सॉरी एडवांस में मिल गया है। मिला कितना एडवांस में? 10 लाख तो मुझे मिला, पर एक्स्ट्रा मुझे मिल गया एडवांस में 1,50,000। तो पैसा मिलेगा मुझे फर्स्ट कॉल में 10 लाख प्लस 1,50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,50,000 टू कॉल्स इन एडवांस टू फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, मैंने गलती से फाइनल कॉल बोला, टू फर्स्ट कॉल, ऑलरेडी फर्स्ट कॉल ही था। यस फाइनल कॉल 15 लाख का है आपका, 15 लाख का फाइनल कॉल है। सो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 7 एंट्रीज हो चुके हैं, 7 मार्क लगातार मिल चुके हैं। डोंट वरी, यहां पे आपके पूरे मार्क्स आ चुके हैं, 7 मार्क 15 में से। सो स्टेप मार्किंग रहने वाला है, डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स। ये यहां तक भी लिखा, ये बहुत आसान थी जिंदगी। तो इसके आगे अभी हम लोगों का शुरू होगा। देखो कॉल्स इन एरियर्स जो था वो अपना 15,000 प्लस 500 इंटू 30 और 250 इंटू 30 मतलब 7,500, 22,500 मेरा कॉल्स इन एरियर्स था, और इनकम उसके ऊपर 575 था। ये एंट्रीज मैंने बहुत डिटेल में रेगुलर बैच में बताए हुए हैं, अभी ये एंट्री एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। सो कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट देंगे, और बैंक में कितना पैसा आएगा? 44,250 इंटू 30, बैंक में आएगा 13,27,500। तो देखो 13,27,500, यस यही आया। कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल कर दिया 1,50,000, और कॉल्स इन एरियर्स 2 शेयर है, एक 500 वाले एक 250 वाले, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 8 मार्क हो चुके हैं। इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर 6,000 जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया, शेयर होल्डर टू बैंक इनको पेमेंट कर दिया, तो कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी कैंसिल है। शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ये 375 दोनों कैलकुलेशन बताए। एंड लास्ट एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट देंगे, 15,000 तो मिलेगा ही, प्लस 375, तो कॉल्स इन एरियर्स कैंसिल होगा टू शेयर होल्डर। बेटा एंट्रीज अच्छे से करके जाना, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो भी इसमें फॉरफीचर नहीं था। एंड शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियस 250 अलग से, एंड बैंक टू कॉल सिनेरियस टू शेयर होल्डर 4 महीने के बाद लगातार इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। यहां पे मेरा पूरा मॉक टेस्ट पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स थे 375 250 की एंट्री अलग अलग करनी थी बेटा, इसलिए 625 नहीं दिख रहा है। दोनों एंट्रीज अलग अलग करने थे, एक 3 मंथ्स एक 4 मंथ्स, तो एंट्री अलग करने की वजह से सुमित 625 नहीं दिख रहा है। गॉट द कॉन्सेप्ट? यस। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड मॉक टेस्ट पेपर, पूरा डिस्कशन, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर आपके रिवाइज हो गए। ये लेक्चर
आशा करता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाद में भी देखेंगे, जब भी एग्जाम का डिस्कशन होगा, हाउ टू कंप्लीट इट विद इन टाइम। देखो पेपर समझ में आना इज वेरी इजी, हमने 2-3 क्वेश्चंस टाइम लगा के आप देख सकते हो सॉल्व भी किए हुए, तो आपको प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है कैसे सॉल्व करना है, डिस्कशन तो किया ही है पूरे पेपर का। और जो बच्चों ने पढ़ाई अच्छे से की है उनके लिए बहुत आसान था, नहीं की है तो बेटा आप लोग एक तो आईसीए बीओएस के लेक्चर्स देखो, या एटलीस्ट आईसीए पुणे ब्रांच के हम लोग ये इनिशिएटिव लेके क्लासेस करते हैं जहां पे मैं एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा निचोड़ के रख देता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाता हूं और आपको हर क्वेश्चन पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। जो भी मॉड्यूल में तगड़ी तैयारी करेगा उसको बिल्कुल भी ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं जाएगी और आपको ये पेपर आसान ही जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, मॉड्यूल के सभी क्वेश्चंस को देख के जाना, एक कैटेगरी क्वेश्चन जितने भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स है उसको कंप्लीट करना, जो इजी इजी क्वेश्चन है उसको ऊपर ऊपर तो भी देख के जाना। आप देखो पेपर थोड़ा लेंदी भी रहता है, पेपर इजी भी रहता है, जिन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है आप लोग देख सकते हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि पेपर कंप्लीट नहीं होता सर हमारा 3 आवर्स में, पर जिन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस किया है, एक एक क्वेश्चन 4-4 बार सॉल्व किया, और बेटा एग्जाम हर साल में 3 बार होने की वजह से आई डोंट थिंक कि अभी आपको इतना कुछ डिफिकल्टी आता है, क्योंकि सपोज ये एग्जाम, और प्रिपरेशन को स्टॉप मत रखिए, जब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तब तक अपने फाउंडेशन के क्लासेस को कंटिन्यूएशन में रखना। जो भी बीओएस का लेक्चर चालू होगा वो देखिए, नहीं तो अपने पुणे ब्रांच ऑफ आईसीआई का लेक्चर भी देखिए, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी डाल के रखे हुए, उसका भी फायदा आप लोगों को हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, 100% रिजल्ट लेके आओगे, सभी पेपर्स में अच्छा करके आओगे। और क्वेश्चन आंसर्स को अभी ये 10 दिन में ना नया कुछ ट्राई मत कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उसको टाइम लगा के सॉल्व कीजिए, पेपर मैक्सिमम सॉल्व कीजिए, 3-4 पेपर्स को राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तो ये पेपर्स आपको इजी जाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। वैभव जी आप है वहां पे? Yes, sir, I am there. यस, एक ही मिनट, हाँ वैभव जी। चलिए बोलिए। Thank you so much, sir, for such a interesting and uh, productive session. I, Vaibhav Ambore, editor head of Pune Vikasa of ICI, extend my heartfelt gratitude towards CA Sanket Shah sir for taking such an interesting mini marathon of CA Foundation accounts. Thank you so much, sir, for your invaluable time. I also would like to thank all the branches connected through Zoom and meeting. Also, last but not least, our Pune branch staff who has been supporting us for every session and every event and spending their time with us. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Vaibhav ji, one small announcement is there. Okay. We are going to conduct one marathon session before exam, 3 days before exam. So we will plan according to that. So you have to inform students, and we will share this information on BOS also. So the session will be on, might be on 8th or 9th of May. Okay. 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 Yes. Yes. Thank you. Yes. Thank you. Thank Take you. care.